A very good morning to all of you. Welcome to this special session of Mission Smile. And I am very happy and excited to share this session with Dhruv, who has been with us for, I think, about a couple of years now. And he has stepped up his research. And today, the whole research is going to be shared by him only. I'll just share my screen and let me know if you can see my screen or not. I hope the screen is visible. If anyone can just point out on the chat box if the screen is okay. Great. So first of all, I'm getting some requests to record the video and all. Don't worry about recording. We are recording the video and the recording will be put on our YouTube channel as well. Please stay till the end, because towards the end we'll have a round of Q&A also, not just related to the session, but also related to a couple of things which I'm going to speak about now. So as you can see the title, 70 small cap companies, 7 essential learning. So we at SmartSync Services, last year, we made a screener of SSS small cap watchlist stock. And there were 100 names which popped up based on that screener. And we have finished the study of 70 of them. And the remaining 30 will be finished in the next couple of months. So Dhruv is going to share some of his learnings, some of the common investing patterns which he noticed in these 70 companies. But before going, I'll just give you a flavor of what is Mission Smile. Okay, so let me just let me know if you can see my other screen. I'm just sharing now. Can you see it? I hope it is visible, right? The Mission Smile platform, right? So I'll just take 5 minutes to explain not only to members, but also to non-members what we do at Mission Smile. So when you go to the Mission Smile app, this is how the app will, since I have enrolled to the bundle, I can see this 8 courses are available here. When I click here, you will see the different courses which are available for you. Okay, so I'll just quickly take 1 or 2 minutes to explain every courses. When I go to Mission Smile webinars, as I'm going now, you can see there are 3 sections. One is sectoral analysis, the other is company analysis, and the other one is other resources. So what are these? So over the last 2 years and more, what we have done at SmartSync Services and Mission Smile, we have covered several industries, several companies in detail. And that is what you can see over here. So there are so many industries we have made. And this is where on the right side, you can see so many companies we have done. You can see Tata Consumer. All these are 2 years, 1 year, some are 1 year old videos, some are 2 year old, some are recent ones, Cartwright Tech, Sansera Engineering. You can see all. Affordable housing finance we did last year. Very recently we did on Wonderla Holidays and Supreme Petrochem. So all what we do at Mission Smile is available. The recording of the same is available here. Apart from that, there are other resources here where you can see some common mistakes which we do at investing. Then there are some Q&A sessions. Mr. Jay Shah, who is a very good investor, who has a very good understanding of the chemical space, he did a masterclass for our Mission Smile members. So that is also there. So that is about the Mission Smile webinars. Okay. And next is the 100 small cap watch list. You can see over here as the this thing is getting opened. Already 60 small cap notes you can see over here. We have already uploaded that. The remaining 10 will upload by the end of today, by the end of this day. I'll just go to one for just to give you a flavor. Raghav Productivity Enhancer. Again, it's not a holding. We're not making any recommendation, but we're just trying to give you a flavor as to what kind of detailed work we do. Okay. I'll just quickly glance through the report so that you can have a flavor of the report, what we have done here. Okay. This is detailed notes on Raghav Productivity Enhancers, right? That is one.
Now I'll go back to the Mission Smile main platform again. Then there are SSS research notes. So over here, what we do, we have more than 15 companies detailed research notes made, and we have shared the PDF of that. You cannot download the PDF. The platform is such that you can access everything. You can see, you can watch the videos, but you cannot download anything. Only if you have a Mission Smile app on your Play Store, on your Android device, then you can download it in your device to watch it even when you don't have internet. Okay. Then there is SSS Ki Pathshala. We have only had 4 sessions yet, but in this year we'll cover many more sessions here. So you can see on the right side again, ROE, P ratio, debt, working capital. Okay. Then comes Chintan Baitak session. So Chintan Baitak session is taken by Atul Rawalji, who is a well-known investor in the microcap space. He has been investing in microcap over the last 30 years. In fact, we did a very good session with him, which is there on our YouTube channel. And it is by far the most watched YouTube video we have on our channel. So if anyone has not known Atulji, I would highly request go and watch. The title of the video is The Magic and Misery of Microcap space. Okay. Then we have a few free sessions, like we invite guests to our platform. So these are the guests we have invited till now. People like Jatin Khemani, people like Tushar Bora, even the great blogger Mr. Nick Majuli, even he was there, Mr. Arvind Kothari. So all these, Ishmohit Arora of SOIC. So all these good peers of our industry, we call them, so that we get to know a whole gamut of how different investors invest in the market, right? And the last one is, or the second last one is Investing Karwa, where we basically call stalwarts who have at least 15-20 years of experience in the industry. We call them for podcast and go deep dive into their investing style. So we had Professor Sanjay Bakshi, Vishal Khandelwal, Abhishek Basu Malik, Gaurav Sood, and there are many more. Recently we had Mr. Ayush Mittal of Skinner, Mr. Manoj Dua, right? So, and there are many more guests and stalwarts lined up in the future as well. And the last one, which is the newest initiative which we have started recently, is Leaders Ka Falsafa, where we call management of listed companies to speak about their business, their journey, their struggle, and their victories. So we had Mr. Sunil Mundra of Natural Capsule. We also had Mr. Suresh Narayanan of CMD of Nestle. And all these videos are also, since these are free webinars, all these videos are also available on our YouTube channel. You can check that out there as well. Okay. So now I stop here. This is what we do at Mission Smile. I thought that it would be good for all of us to have a look at it, so that we can get a good view of a good flavor of what we do at Mission Smile, right? I hope my slide is now available, is visible to all, right? Can I get any, can anyone just share this on the chat? Yeah, great. Thanks, Siddhant. So Mission Smile, I've already told you what we do at Mission Smile, right? I've given you a flavor of that. Another thing which we want to say is that non-members who are joining today, we have this special offer only for people who are joined today. This offer is a limited edition offer. You get 20% discount of this subscription. All you have to do is type get 20. I would request someone from the team to just share the joining link of Mission Smile on the chat box, so that people can go there and use the code if they want to. Okay. This is a big announcement. Next month onwards, maybe on 15th of August, we are launching 2 stock advisory product of SmartSync services.
Number one is micro cap stock advisory, where we will collaborate with Mr. Atul Rawal on micro cap stocks, generally stocks lower than 500 crore market cap. And every month we'll share one detailed report. This is an advisory product, so it is not covered in Mission Smile. Of course, Mission Smile members will get a good discount when we launch it, but this is what we are going to start next month. One is microcap advisory, where Atulji will use his ABCD framework. I'll not go deep into the ABCD framework. If you want to know more, go and watch our session with Atulji, which is there on our YouTube channel. I'll again repeat the name, The Magic and Misery of Microcap Space. The second thing which we are going to launch is our small cap advisory, where we'll give monthly one buy and one avoid call. And the universe for that would be broadly 500 crore market cap to 3000 crore market cap. And you can go to Screener and you can check out our SSS small cap watch list. You will get the screen. So that would be the initial screen for stocks, but will not be limited to that screen only. So what you will get a report, a couple of reports from us on the small cap space and one report on the micro cap space. More details we'll share next month when we launch this. And if anyone has any question, you can get back to us on chat, on DM. You can DM us, you can write email to us, or reach out to me directly. We'll explain that to you. So with this, now I'll stop sharing my screen. Dhruv, I think it's over to you. I'll just run the disclosure. Since there are so many stocks, it is fair to assume that there might be a few stocks which we might be holding. Okay. And even Dhruv might be having position in some of the stocks because he has done all the hard work and researched these companies. So with this, Dhruv, I've stopped my screen. You are muted, Dhruv, so you can just start. Just a second, I'm sharing. Yeah. Is my screen visible? Yes, go ahead, Dhruv. I am putting myself on mute and I'm stopping my video so that there is no disturbance. Sure. So good morning, everyone. Thanks for joining the webinar. So before I start my presentation, I just want to talk about mental models. So Charlie Munger has greatly influenced my decision-making and investing frameworks by talking frequently about mental models. So earlier, whenever I used to study one stock, I used to always feel that I have spent so much time understanding the business, the industry, but still I'm unable to invest because of some reasons. So what is the point of studying so many companies? But then, after reading so much about Charlie Munger, I understood the power of mental models. He always claims that whenever you have a lattice work of frameworks, then you can implement it across different styles, investing universes, situations, and everything. So the idea is to learn as many mental models as possible so as to improve your decision making. So with that in mind, I would like to start my presentation. But just a disclaimer that I might own some of the stocks, but a confession as well that majority of the stocks are not owned by me. So you will find it a bit different that why am I presenting bull cases around these stocks even though I'm not invested. So that is the point of the whole presentation. The idea is not to give you a buy or sell recommendation, but to tell you some frameworks that one can apply across different stocks, irrespective of whether one invests in these companies or not. So with that being said, let's start the presentation. So the first framework, change in management. So one would have often seen that in recent times, especially, whichever companies are announcing some change in management, like let's say SG Finserv, MK Ventures, and all such things, उनका बहुत कम time में price run up has been very massive. So change in management is currently the flavor of the town, basically. So everyone want to track new open offers, change in management, and all such things. But here I would present कि क्यों change in management से stock price में return है. I would rather try to tell you कि change in management से कैसे business में change आ सकता है, जिससे ultimately stock price में फर्क आएगा. So I would like to explain that using the case study of Tanfec Industries.
So those who don't know about this business, Tanfec is basically into fluorination chemistry, wherein they produce raw materials used in the fluorination chemistry. So their products are primarily segmented into four parts: hydrofluoric acid, aluminium fluoride, sulfuric acid, and specialty fluorides. And out of these, the specialty fluoride segment is gaining good share out of the total revenues. Why? Because they produce one type of fluoride, namely potassium fluoride, that was used in COVID vaccine. So because of that, the earnings and the revenues increased massively during FY 21-22 period. So during that period as well, this stock came into our limelight. But through this small cap watch list, we got to study this business in more depth. So about the business. So the business was basically established in 1972 by TIDCO, that is Tamil Nadu Investment Corporation, and Birla Group companies. So they had this joint venture for close to 50 years. But then came Anupam Rasayan. So Anupam Rasayan is a recently listed company. I think it was recent. It was listed around 2020 to 2021 period, and the company was seeing good growth in its revenue profile, and there was high demand for this product. But they faced one issue: they needed some raw materials to make their products, and naturally, Tanfec being one of the major producers of the particular raw material which they wanted, so they decided to take a major stake in the business so that they can not only get consistent supply of raw materials, but also ensure that the business grows and they get benefits out of that as well. So that was the core rationale behind their open offer regarding acquisition of Tanvec Industries. So currently, both TITCO and Anupam Rasayan hold 26% stake each into this business. And yeah, as I've told you, that it is one of the largest manufacturers of raw materials used in fluorination chemistry. So you can see the application of different products. So widely, their application is around refrigeration, gases, petrochemicals, glass industry, ceramics, pharmaceutical, agrochemical companies, and whatnot. So their products have wide application. But why did I talk about this business? And what was the key trigger that one can learn from the business, irrespective of whether one invests in this business or not? So if one will see that Anupam Rasayan acquired around 25% stake during FY 21 period, around Feb. And you can see the stock price. During that period, the stock price was hovering around 600 rupees. And if you will see that within 1 year, the stock price has zoomed to 2000 rupees. So that's a 3x in 1 year. So again, I'm not invested in this stock, sadly. So the idea about presenting this company is not that invest in this company or this company has done so much good, but rather than understand some key trigger or framework that one can apply in different companies as well, so that maybe one can make 3x returns in 1 year in future. So what was the rationale behind their acquisition? So as I've told you before as well, they wanted consistent supply of raw materials due to the impending demand that they were seeing in their business. So raw material was essential to ensure that they will be able to supply to their customers. So because of that, they acquired the stake. But what was the benefits to Tanfec Industries? So whatever raw materials that Tanfec Industries provided to Anupam Rasayan, that was used to make finished products, which were ultimately sold to the other customers. So what happened that since Anupam Rasayan was growing at a rapid pace, so ultimately, as it will supply higher volumes of goods, finished goods, so they will ultimately require more raw materials. Just a second. Can we please stop this annotation? Just a minute. Yeah, you can continue, Dhruv. I'll work Yeah, on. I have highlighted. No issue. Yeah, sorry. So basically about this business, so Tanfec would have benefited out of the demand that came because of Anupam Rasayan's finished products demand. So what do I mean by that is, as Anupam Rasayan will grow, ultimately it will ensure that Tanfec will get supply or demand for their particular raw materials.
And since Anupam Rasayan was growing at a very rapid pace, so Tanfec Industries got indirect benefits of its own growth. So out of nowhere, it got a consistent revenue stream because of the acquisition by Anupam Rasayan. And as one can see from the stock price, it has done a 3x move within 1 year. But again, why management change is a key catalyst. One could have ideally invested in Anupam Rasayan as well, since it was also growing at a rapid pace. So this is why when I say that management change is a very key catalyst, it is not because the management will drive some extraordinary returns in the ultimate business that they are acquiring, but also because of the sheer valuation gap that these both businesses generally have. That since a better management takes place of the existing business, ultimately the existing business will get re-rated, coupled with earnings performance growth. So that will ultimately lead to very high performance. Because for a good stock price return, one needs two characteristics for good returns. So first is earnings growth. That is, if new management derives some operational efficiency in the core business as well as the acquired business, then ultimately earnings growth will come. But other thing is PE re-rating. So if a company is having low PE, low valuations, and if a new management comes and the perception around the business changes, either because the management has good profile or because the entire business model completely changes because of the acquisition. So because of that, the valuation will also re-rate. So ultimately, the overall total shareholder returns will be higher. As one can see, during March 2022, at the time of acquisition, Anupam Rasayan was trading at a price to sales of 8.5 times, while Tanfec Industries traded at only 2 times. The PE ratio for Anupam Rasayan was 67 times, while that for Tanfec Industries was only 12.5 times. ROC, you will see. ROC for Anupam Rasayan was only 11%, while for Tanfec, it was 65%. Now, I will talk about why is this so high for them and is it normal or not. But just to give an overview, the operating margins were also not vastly dissimilar. Anupam Rasayan had 20% margins and Tanfec had 24% margins. But here are some caveats. The ROC that one sees in Anupam Rasayan is depressed because they were consistently doing capex, because of which the capital employed increased. While because the demand was suppressed during that period owing to COVID, the PAT was lower while the capital employed, that is the denominator, was higher. Ultimately, the ROC was depressed in nature. While for Tenfec, because of the extraordinary demand for COVID vaccine, they received one-time extraordinary profits. So because of that, that ROC profile seems extraordinary. And this is not sustainable at all. And similarly for price to earnings. See, because the PAT was high for Tanfec Industries, ultimately they would look cheap on PE basis. However, the sheer gap between these two companies is something to ponder about. Even though some of the aspects for Tanfec are suppressed, while that for Anupam Rasayan seems high, however, that might not be the case if one deep dives into the business. But the core point behind studying this is if one ideally looks at this valuation profile and their operating margin prospects, one will see that there is not a vast difference in the core business. Yeah, Anupam Rasayan is clearly a better business model because they have R&D edge, they are a bigger player, and they are more capital intensive and higher working capital intensity type of business, because of which there are more entry barriers. So if you ask me which is a more moated business, I will say Anupam Rasayan. But if you will ask me during that period, in which company will you invest? I would have said Tanfec Industries. Because if I just have to look for growth prospects perspective, that if Anupam Rasayan grows, then ultimately, because they will need the raw material to grow, and then raw material will be supplied by Tanfec Industries. So ultimately, their growth should mirror a little. Now, Anupam Rasayan has several other products as well, which might derive higher demand, and because of that, there might be some gap between their growth prospects. But ultimately, if I just need to create a blanket statement, then their growth prospects must be a bit similar because of this change in management situation. So yeah, because of some caveats that we've learned that Anupam Rasayan, even though is a better business model, and their earnings and price to sales and everyone were depressed or
we're seeing extraordinary expansion, like in that case of Tanfic Industries, wherein operating margins seem a bit high and ROC is extraordinary. But if I just look at the whole picture, I can see that Tanfic Industries is having much more value, much lesser valuation vis-a-vis Anupam Rasayan. So just from a valuation perspective, Anupam Tanfic Industries is not only cheaper, but the growth prospects look similar. So this is why I meant that management change can be a good catalyst, because not only can you get benefit of a good management taking over a bad business or a okay business, but someone that has more operational strength, but also because the valuation re-rating can be so good that ultimately your overall return will be very good. So that with that, I can conclude my Tanfac presentation. So as you have seen, I have not presented in detail about their business and everything, because the idea about this presentation is not to give you some case studies about what this business do and how should you study the business, but rather show you some key triggers, the mental frameworks, because of which some extraordinary returns happen in the stock price. So this whole presentation is primarily focused on that part, the key triggers that one can learn and implement in other businesses as well. So now I will talk about the second business, Goldem International. So this business has been in news since last 2-3 years because of its extraordinary price performance. If one will see its share price chart, it has given close to 10 times return within 2 to 3 years. But what was the key catalyst that one could have identified before it gave that extraordinary return? Now, again, a confession, I am not invested in this business. But yet, after studying these businesses, I could get a sense of some key triggers because of which this extraordinary returns happened. So basically, whenever I identify new business, I will focus on those aspects. So with that being said, the second framework is higher capital allocation or reinvestment in the core business. But why am I focusing too much on reinvestment part? So we will learn about that more. So firstly, about Goldium. So Goldium has been a big established player in the jewelry space, organized jewelry space, since last 3-4 decades. It was incorporated in 1986 by Rashesh Bansali and his father, and currently it is being headed by his son Anmol Bansali along with Rashesh Bansali, of course. So what is special about this business? It is one of the only backward integrated players in LGD business. What is LGD? So LGD is basically lab grown diamonds, which are gaining increasing prominence in current times because of its qualities as well as cheaper prices. So if one will see the presentation, they not only do in-house LGD development, but also they integrate that with their jewelry and then distribute it to the distributors itself. So they are present across the value chain. So that what makes this business a bit unique and special. And one can see that before they enter into LGD space, they were primarily into diamond jewelry making. They produce diamonds, they integrate into jewelry and then distribute it in exports market. But now after the introduction of LGD, their business has changed drastically. As one can see, I was wrong. The 10x move didn't came in 3 years, but in fact it came in only 1.5 years. So the business has primarily two segments. One is jewelry business and second is investment business. But you will wonder why a jewelry business is having an investment division. Well, it's not an operational division, but still they have to classify it as an investment segment because of the reason that I will mention forward. So as one can see, during June 20, it was trading at around 22 rupees. Now, when I say that it gave a 10x move, I'm not giving an arbitrary figure that इस time पे buy करे तो इतना 10 गुना हो जाता. But the idea is to identify that if I was in that position again, then I would have found some key triggers during June 20 period. So because of that, I'm just saying कि if I could have identified the triggers in some new business today, and if I would have held on to that business for 2-3 years, then there might be a possibility that the business could have returned this type of returns. So again, 10x return is extraordinary and it might not happen ever. It's
really extraordinary. But the idea is to focus on some key triggers that could have helped you basically buy that stock during that time. So, but again, why this 10x movement in within 2 years? So if you will see that before that period, it was very stagnant. The stock price was going nowhere. And then within 2 years, it gave 10x move. So what was ailing the business before and what changed afterwards? So as you can see, this is a extract from their annual report, wherein they have classified the two business segments and the revenue and assets that they have invested in the business. So you will find one anomaly in this picture. You can see that ROE for the jewelry business is around 30%. Well, that for the total business is only 8%. And as one might know, the quality of the business is generally derived from ROE. So ideally, if I would have just focused on ROE during that period, I would have ignored that business completely. Why? Because its overall business ROE was only 8%. And I have a key barrier that I need to invest in businesses that have more than 15% ROE, for example. So I would have missed out on that business completely. And this is why reading about the business that changes has helped me improve my framework. So can anyone guess what is the reason behind this 8% ROE for the consolidated entity, while for the jewelry segment it is more than 30%? So would anyone like to attempt that? What is the reason behind that? One can answer in chat box as well, if one wants. Dhruv, if you can repeat the question, I think it would be better. Yeah, sure, sure. So basically, this is a photo from AR 20 annual report around FY19. So as you can see, they have given segmentation of their jewelry business revenues and assets invested and investment activities revenues and assets invested. So if one will see, then their ROE, that is their PAT divided by their equity invested for jewelry business is around 30%, while that for the entire entity is only around 8%. So my question is, even though this is a jewelry business and the jewelry business is performing extraordinarily well, which is reflected by the extraordinary ROE of close to 30%. But what is ailing that entire business because of which that total ROE is only 8%? So can anyone guess the reason behind this anomaly? So Dhruv, people have already started giving the answers, and I think we have got the right answers. If you can check the chat box. Yeah, inappropriate capital allocation strategy. Right. Because they have more allocation towards low ROE business. Exactly, spot on. So what one can see is, even though their investment activities are generating close to negligible profits, but the assets invested in those segments is close to that of jewelry business. And why is this a big issue? Because this is a jewelry business. And the investment activities primarily comprises of investments made in mutual funds. So that is not their core business operations. However, the assets invested in that business is substantial in nature. So because of that, their overall ROE is only 8%. So if you will ask me during that time, I would have completely ignored that business because that overall ROE was not good and their capital allocation strategy was a bit weird. That why is a jewelry business investing so much in mutual funds? But this is why understanding and reading about the businesses help in developing my framework and hopefully it will help yours. So during annual report 2020, they mentioned something very interesting. So if someone has, I know many would be consistently reading annual reports. So in every annual report, they have a section wherein they talk about the new R&D initiatives, the new product developments, the new environmental friendly initiatives that they have taken. So generally, I used to before ignore that segment completely. Like क्या है अगर R&D में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एनवायरमेंट फ्रेंडली कुछ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सपोज एनवायरमेंट रिन्यूएबल लेके आ गए जिससे एनवायरमेंट को बेनिफिट हो रहा है तो उससे मुझे क्या मेरे को तो बिजनेस समझना है तो अर्लियर आई यूज्ड टू कंप्लीटली इग्नोर दिस एस्पेक्ट बट व्हाइल रीडिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन I found out something very interesting. During that time, they didn't mention anything about
lab grown diamonds in their core MDA section, that is management discussion and analysis section, which generally all the analysts read. But in that particular R&D wala section, they mentioned that they are working on few products like lab grown diamonds and non-cadmium jewelry, which is a way of making lab grown diamonds. So if one would have read the particular annual report thoroughly, one would have identified some key triggers that they were investing heavily in lab grown diamonds. And if one would have done more deep dive into what is lab grown diamond and why is it a big thing or why it can be a big thing in future, then that would have been a key trigger towards at least focusing on that particular business. So firstly, what is lab grown diamond? So as one would have seen that normal जो diamonds होते हैं that are very expensive in nature. So currently what is a new trend that is going on is lab grown diamonds बनाते हैं, basically diamond ये manufacturers like Goldium. And ये जो diamonds होते हैं lab grown होते हैं, इनकी quality is generally higher than normal diamonds. But the issue with that is that ये लोग 30 to 40% cheap होते हैं versus their core diamond, that is the normal natural diamond. And since natural diamond is less environmental friendly because digging and mining करके diamonds निकलते हैं and उसमें काफी carbon emissions and वो सब होते हैं versus lab grown diamonds. So not only lab grown diamonds are more environment friendly, they are also cheaper in price. And the best part is since they are produced in house, that is ये लोग अपनी factory में manufacture करते हैं, तो इनके जो margins होते हैं lab grown diamond में, they are very high and the realization also are very high. So if I understand this properly, lab grown diamonds not only have higher margins, but they also have higher ROE in the business. So अगर मैं subjectively सोचूं कि अभी जो इनका इन्वेस्टमेंट वाला जो डिवीजन है जिसमें इन्हें इतने एसेट्स इन्वेस्ट करके रखे हैं, अगर इन्हें वो इन्वेस्टमेंट वाले एसेट्स लैब ग्रोन डायमंड में डाल दिए, तो सिंस लैब ग्रोन डायमंड के मार्जिन्स एंड आरओईज आर मच हायर देन देयर इन्वेस्टमेंट बिजनेस, सो अल्टीमेटली इनका जो ओवरऑल आरओई है जो अभी खाली 8% दिख रहा है, वो बढ़ के अराउंड 15-20% भी हो सकता है. सो एक ही मैं ट्रैक करने के एटलीस्ट ट्राई करता कि ये जो न्यू सेगमेंट है इसका क्या अपॉर्चुनिटी है. एंड इफ यू विल सी दैट ये कोई फैड नहीं है. अमेरिका में क्लोज टू 7 to 10% ऑफ द मार्केट अभी लैब ग्रोन डायमंड में शिफ्ट हो चुका है एंड उधर का मार्केट काफी अच्छा ग्रो भी हो रहा है लैब ग्रोन डायमंड के लिए. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होता है टू स्टडी कि क्या ये बहुत बड़ा सेगमेंट बन सकता है फॉर द बिजनेस. एंड इफ हम खाली यही पर्टिकुलर एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं उस टाइम पे, तो एटलीस्ट हम मोर एम्फोसिस देते हैं टुवर्ड्स द बिजनेस rather than इग्नोरिंग कंप्लीटली कि इन्वेस्टमेंट में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोर बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, तो क्या फायदा पड़ने का. क्योंकि नॉर्मली मैं ऐसे इग्नोर कर देता कंप्लीटली कि बिजनेस अगर कोर बिजनेस के अलावा कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो दैट इज अ बैड मैनेजमेंट. बट व्हाट इफ दे स्टार्ट री इन्वेस्टिंग इन दैट कोर बिजनेस at higher ROEs and higher margins, then their overall business profile will completely change. And not to forget, LGD का जो ग्रोथ आएगा उससे टोटल बिजनेस का भी ग्रोथ बढ़ जाएगा. So the prophecy in hindsight turned right. If one sees AR22 का segmental information, then you will see that jewelry business में जो इनके revenues थे, that have close to doubled, while the assets in the jewelry business have increased from 20, now I think so it is 200 crores if I'm not wrong, to 400 crores within 3 years. And you will see that the investment activities में दिख रहा था पहले 18 times में 19,000, वो अभी change होके 14,000 हो गया. Now this is 140 crores if I remember correctly. So 190 crores से सीधा 140 crores हो गया. So one can see इनका जो इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स द कोर बिजनेस इंक्रीजिंग एंड इनका जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है जिसका यील्ड कम रहता है उसमें इनका इन्वेस्टमेंट्स कम हो रहा है, जिससे इनके अल्टीमेटली ओवरऑल आरओई जो है वो काफी इंप्रूव हो गया. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इनका आरओई वाज क्लोज टू 25% इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दिस इज अ मैसिव जंप फ्रॉम अर्लियर 8%. सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो बिजनेस खुद के बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगा एंड प्रोवाइडेड दैट बिजनेस में ROE और margins are higher. So ultimately इनका जो ओवरऑल बिजनेस जो हमको डिप्रेस दिख रहा है जिसकी वैल्यूएशन भी कम होगी बेसिकली बिकॉज मार्केट ऐसा अज्यूम करेगा कि ये लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी या फिर इनके जो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है
वो इतने अच्छे नहीं होंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट उनकी वैल्यूएशन री रेटिंग भी होगी, एट द सेम टाइम उनके अर्निंग्स ग्रोथ भी आएगा और उनके आरओई भी इंप्रूव होंगे। तो ये सब चीज जब कंबाइन होगी तो इससे अल्टीमेटली शेयर होल्डर रिटर्न विल बी मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी। So as one can see 10x move in 2 years, and as one can see कि इन्वेस्टमेंट्स में इनके जो था वो कम हो गया, while इनका जो ज्वेलरी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट्स थे that close to double within 3 years. And the new initiatives, so I have again said कि LGD बिजनेस जो है उसके इंक्रीमेंटली हायर मार्जिन है एंड उसके आरओई भी नेचुरली हायर है। एंड ये लोग अभी जो न्यू इनिशिएटिव ले रहे हैं जैसे कि ओमनी चैनल वेबसाइट लॉन्च करना जिससे अपना बिजनेस एसेट लाइट हो गए, एंड ये जो भी इनिशिएटिव ये लोग ले रहे हैं इससे लॉन्ग रन में इनके आरओई कैन गेट हायर वर्सेस देयर प्रीडोमिनेंट लेवल्स लाइक जो 8% पहले इनका था। एंड मेन पॉइंट इज अभी हमको नहीं मालूम कि एलजीडी के डायनामिक्स आगे कैसे ग्रो होगी। एंड द आइडिया इज नॉट टू टेल यू कि अभी बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो कि एलजीडी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, बट if one would have been in that situation during FY 19-20 period and one would have seen कि ये लोग कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जिसके आरओई और मार्जिन हायर है, एंड ये लोग अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर रहे थे सेम चीज। एंड इफ वन वुड हैव सीन कि इनका उधर से आरओई मार्जिन सब एंड ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ भी इंप्रूव हो रहा है, सो दैट वुड हैव बीन अ वेरी गुड ट्रिगर जो नॉर्मली हम नहीं लेते। इफ वी वुड हैव जस्ट केप्ट अ ब्लैंकेट आई अप्रोच की आरओई 15% से कम है, कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी प्रॉपर नहीं है तो इसको इग्नोर कर दो। तो अगर हम ये फ्रेमवर्क अप्लाई करें उस बिजनेस में कि री इन्वेस्टमेंट करें कोर बिजनेस में, तो अल्टीमेटली हम लोग मे भी उस बिजनेस में उस टाइम पे इन्वेस्ट कर पाते, अगर नहीं भी करते तो हम ये आगे जाके कोई और बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं rather than completely ignoring them. So that is the whole point behind this framework, that is higher reinvestment in their core business. So as one can see इनका जो कैश का जो था जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो था वो बहुत हाई था इन्वेस्टमेंट्स उसमें। So if you one will see that इनका जो ज्वेलरी बिजनेस में जो एसेट्स थे एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जो एसेट्स थे बट ऑलमोस्ट सिमिलर इन नेचर, बट नाउ इफ वन सीज तो इनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था जो 64% ऑफ टोटल एसेट्स था या टोटल इक्विटी था दैट इज रिड्यूस टू ओनली 40%। इसमें स्टिल स्कोप है कि 40% कम होके और 20% या 10% हो जाए। नाउ अगेन आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस, I may or may not invest in future, but the idea is to focus on these drivers now कि कैसे ये अपना इन्वेस्टमेंट पोजीशन जो है जिसमें यील्ड बहुत कम है, आरओई कम है, मार्जिन कम है, उसको ये अपने हायर मार्जिन हायर आरओई हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वाले बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करे, जिससे इनका अल्टीमेटली जो इनका कोर बिजनेस है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल बिजनेस मिक्स इंप्रूव्स। तो उससे इनका ओवरऑल आरओई मार्जिन ग्रोथ सब बिजनेस में इंप्रूव होगा एंड अल्टीमेटली मार्केट इनको बेटर वैल्यूएशन देगा। तो दिस इज अ की ट्रिगर टू लुक फॉरवर्ड एज वेल कि कैसे ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो को कम करके कोर बिजनेस में डाल सकते हैं। एज वन कैन सी इनका F1 19 पीरियड में खाली आरओई 12% था, दिस हैज जंप सब्सटेंशियली टू 21%, एंड स्टिल इनका देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स और कैश में काफी सारे इन्वेस्टमेंट है। Even after that, they are able to generate ROE of close to 20% in their whole core business. That is the overall business. So again, this is a good trigger to track कि कैसे कोई बिजनेस अपना जिसका इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा अभी करंट कंट्रीब्यूशन है वो कैसे उसको कम करके अपने कोर बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है। So this is a key trigger if you ask me. And yeah, the growth, why am I saying कि वो अपने कोर बिजनेस में इन्वेस्ट करके ग्रोथ ला सकता है? तो बेसिकली ग्रोथ के की दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक तो जितना आप अपने बिजनेस में हाई री इन्वेस्ट करोगे एंड वो आप अपने री इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न कमाओगे। So basically higher reinvestment rate and higher return on equity, that is how much returns you get from the amount that you have invested in that business. And since we have seen कि LGD की वजह से इनका reinvestment तो बढ़ ही गया, but since LGD के ROE were higher, तो ultimately इनकी growth भी improve हो गई। So this is a very key framework to keep in mind कि कैसे कोई बिजनेस अपना ROE बढ़ा सकता है और री इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और अगर दोनों चीजें साथ में हो रही है तो ग्रोथ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल ही जाएगी। So that is the idea behind this company. Now I think we can take some questions. So Dhruv, I have been answering all the questions on the chat box till now.
So there has been no major question. If anyone has any other question right now, we can take a 1 minute or 5 minute break and take some questions. You can put it on the chat box. Yeah, Meet bhai, I'm unmuting you. You can ask the question. Hello, am I audible? Yes, Meet bhai. How are you, Ankit bhai? All good, all good. Okay, Dhruv, fantastic presentation, bhai. बहुत बढ़िया. Thank you. So I just want to add a few points, Ankit bhai. I will try to add few learnings of mine when I focus on open offers and management change. So India में अभी कैसा अंकित भाई? There are many businessmen who are excellent in their business world, but they have broken balance sheet because their financial discipline was not good, right? So in stock market plus business, what we need is एक बंदा जो होता है वो धंधा संभाले, एक बंदा जो होता है वो फाइनेंस पार्ट संभाले. That is very simple thing. ठीक है? So if you see with this company Raghav Productivity or even with Goldie M or even with 10FAC, right? You will see that Goldie M's business was good, but the businessman's quality to take that business to a different orbit or to scale it up, okay, without balance sheet को फंसाए हुए या डेट में जाए बिना, वो नहीं थे इनके पास. तो what happened is few years back, Utpal Seth and Ramesh Damani entered this stock, okay, and they guided the management, okay, how they can change the business and scale the business. See, अल्टीमेटली मैनेजमेंट को बिजनेस में ज्यादा पता है, बट इन लोगों को पता है कि बिजनेस को स्केल कैसे करना है, राइट? और जब वो सिनर्जीज क्रिएट होती है ना, देन एक अच्छा मल्टीबैगर इंग्रेडिएंट बनता है. बनेगा नहीं बनेगा, दैट ओनली वी विल नो इन हाइंडसाइट. बट इफ यू सिलेक्ट अ बास्केट और अ बुके ऑफ 10-15 स्टॉक्स with this pattern, there are high probability that you will find 20-30x in 3-4 years. At least आपका 50% पोर्टफोलियो का स्टॉक अच्छा करेगा. सेम विथ राघव प्रोडक्टिविटी. अगेन राघव का जो बिजनेस है, इफ यू कंपेयर दैट बिजनेस विद पोकरना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि पूरा बिजनेस कैसे रन होता है. बट उनके बिजनेसमैन में दम नहीं था, राइट? अगेन उत्पल सेठ एंड everyone came and they guided them. So it's like इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं. तो कहने का मतलब ये कि ओपन ऑफर्स एक दिन में कितने आते हैं. सो 95% ऑफ द ओपन ऑफर्स जो होता है वो ब्लैक का व्हाइट होता है. वी ऑल नो, ओके, तो उसको अवॉइड करना होता है. बट जो 5% अच्छे ओपन ऑफर्स होते हैं जिसमें वी नो कि बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेसमैन क्या कर रहा है, और जो इन्वेस्टर आ रहा है क्या वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है. बिकॉज मेनी टाइम व्हाट हैपेंस इज गुड इन्वेस्टर्स बाय द स्टॉक एंड वो स्ट्रेटेजिकली गाइड करते हैं कि आपको बिजनेस कैसे स्केल करना है, राइट? एंड दैट चेंज द एंटायर मतलब वो बैलेंस शीट ही घुमा देता है. मतलब आप लॉस कर रहे हो और आप सडनली 2 साल में प्रॉफिट पे आ जाते हो. व्हाई? बिकॉज दे हैव दैट गुड बिजनेस सेंस. सो दिस इज द की ट्रिगर टू स्पॉट दिस कंपनी वेरी अर्ली. रिजल्ट बाद में आना है, बट आपको इसका इंपैक्ट पहले दिख जाएगा अनाउंसमेंट्स में. सो ओपन ऑफर्स में ये भी ट्रैक करना चाहिए कि कौन सा मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, तो कौन सा मैनेजमेंट आ रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वीक बंदा निकल रहा है और स्ट्रॉन्ग बंदा आ रहा है, या फिर इसमें सिर्फ गेम चल रहा है. एंड इफ दिस थिंग हैपेंस, then you will see a good wealth creation like what we saw in Safari, we saw in Mungipa, SG Finserv, we saw with Apollo Tricoat, even Adi Fincam, Prem Vatsa Group came and changed the entire territory of the balance sheet. Currently we know them by Fairchem Speciality and Privy Organics. तो कहने का मतलब है कि इसमें भी फेलियर्स होंगे, बट इफ यू डाइवर्सिफाई and focus on the key parameter, that is businessmen and investors, strategic investors, then I think you can definitely ride this trend. Of course, these are my learnings, and I can be wrong, but I think this is the way to go when you know study open offers. Thank you so much, Meet bhai. This was really helpful, and I completely agree with you here. So, and I hope all the audience would have got a very good understanding of how to play these kind of stocks when you are investing in the market, right? Thank you so much, Meet bhai, for your guidance and
experience. I actually learned about this framework from Meet Bhai only. He told me कि ऐसा तू देखा कर कि इसमें कितना अच्छा मूवमेंट आता है, and we had a conversation regarding this. तो तब मेरे को आइडिया लगा कि अच्छा ये फ्रेमवर्क इतना यूजफुल है. So he has been a guiding light for me since last week. So yeah. अरे नहीं नहीं यार, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम समवन. सो जो लर्निंग थी वही शेयर किया आपसे, एंड यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, एंड यू आर अंडर वेरी गुड हैंड्स. मतलब अंकित भाई इज द परफेक्ट टीचर फॉर समवन हु वांट्स टू ग्रो इन दैट करियर वेरी स्लोली. अगर आपको फास्ट जाना है तो फिर आप महालक्ष्मी रेस कोर्स जाइए. Otherwise, Ankit bhai is the perfect mentor for you. No, you guys are doing great, and keep serving the good things to the investor community. Cheers, guys. Thank you so much, Meet bhai. Thank you. So I think Dhruv, you can now proceed with the presentation. Yeah. So now, the third framework, that is robustness ratio and higher switching cost. So I think if anyone would have read about Nick Sleep or his Nomad's investment letters, then he often talks about one ratio, robustness ratio, जिसके through they invested in several companies like Costco, Berkshire Hathaway, and all such names. So we will try to use that framework in Indian perspective. And why does Raga Productivity Enhancer fit in that case? So firstly, what is robustness ratio? So to simplify this, ऐसा assume करो कि कोई business अपने customers को जितना value दे रहा है divide by what they are giving to their shareholders. So ideally, every investor wants कि सब businessman profits का सोचे, margins का सोचे, shareholder को यहाँ dividend payout दे. सब हमेशा ये सोचते हैं कि shareholder का कैसे value create होगा. But if sometimes we can change our perspective by focusing more on वो कैसे अपने customers के लिए value create करे, कैसे अपने customers के लिए अच्छा कर सके versus their shareholders, then there can be a good way of identifying new businesses as well. Because ultimately, a happy customer is a happy business. तो जो business आगे अपने customers को खुश करने में ज़्यादा focus करेगा versus their own shareholders, so that business has own moat because the customers won't leave them. There will be high switching cost. And what do I mean by switching cost? So again, switching cost is a type of competitive advantage wherein a particular customer doesn't shift from one particular supplier to another. Why? Because he has no reason to shift. क्योंकि अगर वो एक कस्टमर या एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर में शिफ्ट करेगा तो नॉट ओनली विल ही हैव हाई कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यू सप्लायर को कैसे सर्विस करना है, उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट करने, बट ऑल्सो इम्प्यूटेड कॉस्ट विल बी वेरी हाई. लाइक उसको कितना प्रेशर लेना पड़ेगा, टाइम जाएगा, रिस्क लेना पड़ेगा कि इनकेस अगर कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ गई तो आगे ब्लेम तो उस पर आएगा पूरा. तो इसलिए ऐसी कंपनी जो अपने कस्टमर को बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन देता है और उससे कस्टमर अल्टीमेटली उनके प्रोडक्ट यूज करके बहुत प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, तो दैट बिजनेसेस आर अ वेरी गुड सोर्स टू इन्वेस्ट इन. नाउ अगेन अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस अनफॉर्चुनेटली, बट द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई सच बिजनेसेस, सच मोटेड बिजनेसेस जिनमें ऐसे फ्रेमवर्क दिखते हैं जो अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करते हैं. एंड इंडिया में ऐसा हमने देखा है कि काफी बिजनेसेस जो अपने कस्टमर को फर्स्ट रख के चलते हैं उन्होंने काफी वैल्यू क्रिएट करा है. द प्राइमरी एग्जांपल बीइंग डीमार्ट. सो बाय फोकसिंग ऑन दीस टाइप ऑफ बिजनेसेस वन कैन आइडेंटिफाई कि ऐसे भी बिजनेसेस है जो आगे 10-15 साल तक भी मे बी स्टिक कर जाएंगे शेयरली बिकॉज ऑफ देयर फोकस टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स वर्सेस देयर शेयरहोल्डर्स. सो विद दैट बीइंग सेड, let's understand what Raga Productive Enhancers does. So basically, they are one of the largest producers of silica ramming mass. So what is silica ramming mass? Basically, this is used to make induction furnaces. It is a sort of inner lining in induction furnaces. And these induction furnaces are used in steel plants and foundry. तो अब आप ये सोचोगे कोई स्टील प्लांट है जिसको इंडक्शन फर्नेस बनाना है. इंडक्शन फर्नेस का बेसिकली काम ऐसा होता है कि वो हीट ज्यादा जनरेट करता है, स्टील प्लांट को ज्यादा एनहांस करता है उसकी प्रोडक्टिविटी एंड ऑल सच थिंग्स. तो ऐसी कंपनी जो इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्व कर रही है, अब इंडक्शन फर्नेस तो बन गया, अब उसकी अंदर की लाइनिंग का कॉस्ट टू द ओवरऑल स्टील प्लांट का कॉस्ट बहुत ही मीगर होगा. हाउएवर उसका जो इंपॉर्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा बिजनेस में. तो उसकी वजह से नो वन विल शिफ्ट फ्रॉम वन प्रोड्यूसर टू अनदर सिंपली बिकॉज वो थोड़ा ज्यादा सस्ता दे रहा है. द आइडिया वुड बी प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है
और स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी क्या है या पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है मैनेजमेंट का, तो उस वजह से वो जनरली स्विच नहीं करेंगे, जिससे हाई स्विचिंग कॉस्ट आते हैं. बट बाय हाई रोबस्टनेस रेशियो, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. So basically, this company was established in 2009 by काबरा ब्रदर्स. बेसिकली जयपुर बेस्ड ये ब्रदर्स है जो ये मैनेज बिजनेस अभी हैंडल करते हैं. जस्ट अ सेकेंड, सॉरी. सो बेसिकली ये दोनों अभी बिजनेस हैंडल करते हैं. करेंटली इनका एक बेटा है राघव काबरा, जिनके ऊपर ये बिजनेस का नेम है. उनने लास्ट 3-4 इयर्स में बिजनेस में एंट्री करी थी, जिसके बाद से भी बिजनेस में काफी अच्छा ग्रोथ आया. तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल विच मीत भाई आल्सो टॉक्ड अबाउट, कि जैसे न्यू ब्लड आते हैं या फिर न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं बिजनेस में, तो उससे भी काफी इंक्रीमेंटल चेंज आ सकते हैं टुवर्ड्स एग्रेशन इन द कोर बिजनेस. सो यार दैट इज अबाउट राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स. इफ यू विल सी कि इनका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है खाली 15 years इतना ही है, तो इट इज नॉट अ वेरी ओल्ड कंपनी. हाउएवर इनके जो प्रमोटर्स है उनके पास मोर देन 20 to 30 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन दिस बिजनेस, सो दैट हेल्प्स. बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मोट, ये रोबस्टनेस रेशियो क्या है और क्यों है इस बिजनेस. So the management in one of its annual report mentioned कि although they are twice or thrice as more expensive than their local competitors, but the value that their customers derive from using their products is more than 5 times of the total cost that they incur in their product. So आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट लिया है, अब मेरे को उसका 10 रुपए लग रहा है और मेरे को बेनिफिट उसका 50 रुपए का मिल रहा है, और कोई सेम प्रोडक्ट 4-5 रुपए में दे रहा है, तो मैं जस्ट वो 5-4 रुपए बचाने के चक्कर में अपने 40 रुपीज का जो मेरा गेन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही है, तो वो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ऑलरेडी तो अच्छा रिलेशनशिप है और मेरे को बेनिफिट्स हो ही रहे इस वैल्यू पे भी, तो मैं क्यों शिफ्ट करूंगा. तो इस चक्कर में बिकॉज द कस्टमर इज डिराइविंग सो मच वैल्यू आउट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, so even if they charge a premium price for their particular product versus their competitors, customer will still not switch. तो इससे इनका मोट आ जाता है, बिकॉज ए इनका कस्टमर बहुत बेनिफिट कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट से, तो आगे भी इसका प्रोडक्ट यूज करता रहेगा. एंड बी स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है. अभी 4-5 रुपए तुम बचाने के चक्कर में तुम अपना एक सप्लायर नहीं चेंज करोगे, बिकॉज क्या पता सप्लायर उस प्रोडक्ट में भी उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं हो, इससे में भी प्राइसिंग डिफरेंशियल हो, या वो आगे सप्लाई कर पाए कंसिस्टेंट या नहीं कर पाए. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका मोट आता है. एंड इनने एक एनुअल रिपोर्ट में एक एग्जांपल भी दिया था, जहाँ पे दे मेंशन कि बिकॉज ऑफ यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स इनका एक कस्टमर मेड 2.5 crores of benefits, cost savings just by using their product. But again, the cost saving aha kahan se rahe. So as you see, the company's name is Raghav Productivity Enhancer. So what they claim is, आप हमारा प्रोडक्ट यूज करोगे तो अल्टीमेटली आपके जो ऑपरेशन होंगे वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ज्यादा एनहांस हो जाएंगे. सो जो इंडक्शन फर्नेस होता है उसका प्राइमरी काम होता है कि हीट कितना ज्यादा जनरेट कर सकते हैं. तो इनके प्रोडक्ट यूज करके जो नॉर्मल सिलिका रैमिंग मास आता है उससे जो हीट जनरेशन होता है वो इनके प्रोडक्ट से कम होता है. तो दे क्लेम कि इनके प्रोडक्ट से 20 to 25% ज्यादा हीट जनरेट होता है वर्सेस देयर कंपटीटर्स प्रोडक्ट. सो बिकॉज ऑफ दैट वी नो दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज गुड. बट अगेन ये जो इनका जो प्रोडक्ट है इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ऑल्दो इससे प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हायर हीट जनरेशन, बट एट द सेम टाइम ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी है दैट इज नॉट कमिंग एट ए मेजर कॉस्ट. अब कोई भी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होगा, बी इट स्टील, सीमेंट और एनी अदर बिजनेस, तो इनका प्राइमरी कॉस्ट इज फ्यूल, पावर, इलेक्ट्रिसिटी. एंड सिंस ये जो एक्स्ट्रा जो इन लोगों का लाइनिंग होता है इंडक्शन फर्नेस में, दैट इज सिलिका लाइनिंग मास, उसमें इनका कोई एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं आ रहा, बट प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जा रही है. So just by saving from the electricity power cost, they're able to save close to 2.5 crores for their clients from just one plant. So because of this and their high benefits that the customers receive from their products, the company stands apart from their competitors. And not to forget, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इतना अच्छा क्वालिटी का होता है that they claim कि उसका जो रिप्लेसमेंट साइकिल होता है वो कम होता है वर्सेस देयर पीयर्स. तो सपोज की कंपनी का जो सप्लाई कर रहा है उसका ईयर में सपोज 1 टाइम चेंज करना पड़ रहा है फॉर एग्जांपल, तो इनका सेम प्रोडक्ट 2 या 3 इयर्स बाद चेंज करना पड़ता है. सो बिकॉज ऑफ दैट एज वेल customers prefer their product, and here lies their core moat. The core moat is in their product,
the process with which they make this product. And yeah, sir, I just said कि अभी आप प्रोसेस देख सकते हैं इनका, तो स्टील मेकिंग प्रोसेस या फिर फाउंड्री जो भी होते हैं, इसमें एक इंडक्शन फर्नेस लगता है, और जो इंडक्शन फर्नेस होता है उसके अंदर लाइनिंग में लगता है सिलिका मास, रैमिंग मास। तो आप सोच सकते हो कि इसका जो कॉस्ट होगा ये सिलिका रैमिंग मास का टुवर्ड्स द ओवरऑल स्टील प्लांट इज वेरी मिनिस्क्यूल। तो इसलिए अगर ये सपोज कुछ कॉस्ट बढ़ भी जाए इसके प्रोडक्ट के, कॉस्ट एज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट, so it can easily pass on those costs to the customers. Why? Because to the overall scheme of things, स्टील प्लांट का बहुत छोटा कॉस्ट ही है फिर भी, तो थोड़ा बहुत परसेंटेज बढ़ा भी लेगा अगर वो अपना कॉस्ट या प्राइसेस, तो उससे स्टील प्लांट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्विच नहीं करेगा कस्टमर, बिकॉज उसके जो बेनिफिट्स है इंक्रीमेंटली वो बहुत हाई है स्टिल, इवन जो कॉस्ट या प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे। तो उस चक्कर में भी हाई इनइलास्टिक डिमांड है, दैट इज अगर प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे तो भी इनकी डिमांड उतनी फर्क नहीं, अफेक्ट नहीं होगी, तो इससे भी इनका मोट आता है, इससे भी इनकी प्राइसिंग पावर आती है। सस्टेन प्राइसिंग पावर, I have already mentioned majority of the things, so I won't repeat again. But यही है कि इनका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लेसमेंट दैट इज लो, हीट जनरेशन इज हाई, कोई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं लगता एक्स्ट्रा, और इनका एक और जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, बिकॉज ऑफ द स्केल एंड द डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टीम, दे नॉट ओनली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, बट ये लोग जाके इंस्टॉल भी करते हैं, क्लाइंट्स को दिखाते भी है कि देखो आपने हमारा प्रोडक्ट डाला तो इससे आपकी ये प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही है। तो ये जो इंस्टॉलेशन करते हैं इसकी वजह से दे आर नॉट ओनली अ प्रोड्यूसर और अ प्रोडक्ट कंपनी, बट ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो एक प्रोडक्ट बनाते भी है, एस्टैब्लिश भी करते हैं, बेनिफिट भी दिखाते हैं, तो पूरा प्रोडक्ट से लेके सर्विस तक सब काम कर रहे हैं, तो इनका पूरा वैल्यू चेन में एस्टैब्लिश्ड है, मतलब एंड इनको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रहा है एज इन एस्टैब्लिशमेंट का, तो उसकी वजह से भी कस्टमर प्रिफर देम बेसिकली। तो हियर इन लाइज देयर मोड, द प्राइसिंग पावर, द हाई स्टिकी कॉस्ट, high inelastic demand, and ultimately the benefits which the customer receive from using their product. That is the robustness ratio. So yeah, again, एक बिजनेस में आप खाली एक मेंटल फ्रेमवर्क यूज करो ऐसा जरूरी नहीं है, काफी सारे मेंटल फ्रेमवर्क अलाइन हो सकते हैं जिससे आपका जो ओवरऑल थीसिस है वो और इम्प्रूव भी हो सकता है। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि ये कंपनी के जो कॉस्ट है या जो प्राइसेस है वर्सेस द कंपटीटर्स, दैट इज क्लोज टू 2 to 3 times हायर, तो क्यों कोई इसको चूज करता है वर्सेस देयर कंपटीटर्स? So herein lies the concept of value migration. So I won't go into detail of value migration, but basically, after introduction of GST and all such schemes, there is a shift going on from unorganized segment to organized segment, from public sectors to private sectors, due to the cost differential, the service being provided, the quality of the product or the service, and all such things. या फिर इनके प्राइसिंग पावर है, कंसिस्टेंट सप्लाई कर सकते हैं, स्केल बड़ा है, एंड दिस थीम इज कंसिस्टेंट अक्रॉस सेवरल स्पेसेस। लाइक QSR में आप देख सकते हैं कि देयर इज अ एक्सपेक्टेशन कि बड़ा पाव से सीधा लोग डोमिनोज में आएंगे, बड़ा पाव से लोग बर्गर में आएंगे। सो दिस थीम इज नॉट जस्ट ओनली प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस, बट जो भी बिजनेस होगा जिसमें अनऑर्गेनाइज सेगमेंट बहुत ज्यादा हाई होगा, अल्टीमेटली वहां पे एक ये थीम प्ले आउट हो सकता है, बिकॉज द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन कि एंटायर जो इंडस्ट्री होगा वो कितने पेस पे ग्रो करेगा, बट जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज प्लेयर है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर से जब उनका शेयर ले लेंगे मार्केट का, तो अल्टीमेटली उससे भी इनका ग्रोथ ज्यादा आएगा वर्सेस द इंडस्ट्री। तो वैल्यू माइग्रेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क विच एनीवन कैन अप्लाई, बिकॉज ये इंडियन पर्सपेक्टिव में काफी यूजफुल रहता है। तो अगर आप इसमें देखोगे, इफ यू कैन सी द स्लाइड, तो इसमें मैनेजमेंट ने काफी सारे रीजन बताए थे कि क्यों शिफ्ट आ सकता है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज में। तो अपन को ऐसे ब्लाइंड फोल्ड नहीं रखना है कि चलो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट का शेयर बहुत ज्यादा है तो आगे उधर से ज्यादा आएगा, बट वन नीड्स टू थिंक कि क्या रीजन है जिससे वैल्यू माइग्रेशन हो सकता है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेगमेंट टू ऑर्गेनाइज सेगमेंट। तो इनके केस में एक तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि इनका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है दैट इज मच सुपीरियर वर्सेस देयर पीयर्स। दे आर नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट कंपनी बट दे आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज, तो उधर से भी ये डिफरेंशिएट करते हैं। एंड इनका खाली ये नहीं है कि प्रोडक्ट बना के सस्ते में बेच रहे हैं, बट इनका एक ब्रांड है राघव का, जिसकी वजह से भी ये प्राइसिंग डिफरेंशियल चार्ज कर सकते हैं।
फिर some other benefits that they have versus their peers are, normally peers क्या ट्राई करते हैं कि प्रोडक्ट हम सस्ता बनाएंगे, कस्टमर को देंगे, बट ये लोगों ने क्या कोशिश करी कि rather than फोकसिंग कि अपन को ज्यादा कस्टमर के पास लाना है अपन का प्लांट, जिससे हम सस्ते में प्रोवाइड कर पाए। सस्ते में क्यों प्रोवाइड कर पाएंगे? बिकॉज उनके फ्रेट कॉस्ट कम हो गए। सो इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड मेरा प्लांट कोई मेरे कोर कस्टमर के पास है, तो अल्टीमेटली मैं उनको सस्ते में दे पाऊंगा अपना प्रोडक्ट। बट वॉट दे डोंट थिंक इज, अगर आप कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के पास अपना प्लांट ले आओगे, तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आप वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को इजीली सप्लाई कर पाओगे। बट वॉट इफ आप जब रॉ मटेरियल सोर्स है उसके पास ही इतना पूरा प्लांट ले आओ, तो आप अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट में बचा लोगे पैसा। एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दैट आप खाली एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, बट आप अक्रॉस द ग्लोब सस्ते में माल बेच पाओगे वर्सेस जस्ट अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर। So this proximity with raw material supplier versus the customers helps them in not only ensuring कि सर्विस बेटर कर पा रहे, ज्यादा एड्रेसेबल मार्केट साइज हो जाएगा इनका, बट ऑल्सो इनका सप्लाई जो रहता है रॉ मटेरियल का वो भी कंसिस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कस्टमर्स के रिलाई ऑन देम कि ये सप्लाई भी आगे कंसिस्टेंटली कर पाएंगे। एंड सर अदर एस्पेक्ट्स आर कि ये लोग खाली प्रोडक्ट पे फोकस नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ R&D ये लोग ने अपना जो प्रोसेस है ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट वो इतना एनहांस कर दिया, इतना ऑटोमेट कर दिया है, जिसकी वजह से भी मोट आ गया है कि बिजनेस में। क्योंकि आज आप अगर देखोगे कि कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, कोई भी अच्छा फीचर लाते हैं फोन का, तो इमीडिएटली कोई भी कंपनी उसको कॉपी कर लेती है। तो डिफरेंशियल प्रोडक्ट इज नॉट इन इटसेल्फ अ बिग कंपेटिटिव एडवांटेज। Rather, if we focus on the R&D, the patents or the process with which they make the product either better या फिर more cost competitive rates, तो उधर से better मोट आ सकते हैं। So उसकी वजह से भी they stand out apart from their peers. And I've almost mentioned all the points. So yeah, I think here's that कि basically one should understand कि unorganized segment से organized में क्यों value migration आ रहा है and is it sustainable. So in their case ये लोग ने 3 years पहले मेंशन कर था कि इनका जो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट का शेयर था, अनऑर्गेनाइज्ड शेयर ऑफ द ओवरऑल मार्केट वाज क्लोज टू 50 to 60%, एंड विद इन 4 years यू विल सी कि वो खाली 40% आ गया, फ्रॉम 60% to 40%। एंड इट इज विजिबल फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट शेयर, जो पहले 8, 9 या 10% हुआ करता था, वो ये लोग ने इस एनुअल ईयर में 15% कर लिया है। तो नॉट ओनली इनका इंडस्ट्री से ग्रोथ आ रहा है, दैट इज स्टील प्लांट अगर केपेक्स करेगा तो अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल फर्नेस की नीड पड़ेगी, जिससे सिलिका रैमिंग मास की नीड पड़ेगी, बट ऑल्सो बिकॉज जो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट है उससे लोग शेयर स्नैच कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ हो रही है वो इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस, yeah, There is a question by someone, so I'm answering all the question, but I thought you can take it up because others can also benefit a lot. So Divyan sure. asked this question. I had looked at this company earlier, but didn't find big clients who might be consuming their products. If the product is better, why aren't the big players taking or buying their products? So if you will see that export market is pretty good, and recently only I read their annual report, so there are several good clients not only in the customer base, but also they are having very good tie-ups with several suppliers. Like I am forgetting the name of the supplier, but one of the यूरोप की कोई ट्रेडिंग कंपनी आई थिंक सो, जो रैमिंग मास और ये सब में ये बहुत बड़ा प्लेयर है, तो उनके साथ भी बिकॉज ये लोग के जो रिलेशनशिप्स है उसकी वजह से ये लोग अपना एक्सपोर्ट मार्केट ही बहुत ग्रो कर पा रहे हैं। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली इनका डोमेस्टिक में सिंस 15% मार्केट शेयर है, so they must be having some good customers. They haven't named the customers, I think so, but I'm not sure about this part. They don't have good customers. I need to dig deeper maybe because इनका market they haven't mentioned anything कि इनका कौन सा customer अच्छा है या क्या है as such. But the relationships which they have with the suppliers जो आगे इनका export market में help कर रहे हैं, so that gives me confidence कि इनका कुछ प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी बाहर कितने बड़े बड़े प्लेयर इनका टाई अप कर रहे हैं। So Right. again, I can get back to you about that. I'm not sure about the customers. You're right. Go ahead, Dhruv. Sure. So yeah, मीत भाई ने पहले मेंशन कर दिया था कि उत्पल शीट और ये सब बिजनेस में आए थे, बट अगेन दिस इज अनदर यूजफुल मेंटल फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई न्यू बिजनेसेस। दैट इज जब भी कोई अच्छा इन्वेस्टर कोई बिजनेस में बहुत मेजर स्टेक ले, तो इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली इन्वेस्टिंग इन दैट बिजनेस, आप एक बार नोटिस लो बिजनेस का कि ऐसा क्या है बिजनेस में जो एकदम से भी ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड देन स्टडी द बिजनेस।
मे बी एक्चुअल में कुछ ट्रिगर्स आने वाले हो गया आ रहे, या फिर इनका कुछ ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है जिसकी वजह से ये लोग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बिजनेस में, या फिर जो बिजनेस की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि कोई अच्छा इन्वेस्टर आए, सपोज उत्पल शेठ आ गए तो ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दो कि ये लोग बिजनेस में चेंजेस आएंगे, बट एटलीस्ट टेक नोटिस ऑफ दैट बिजनेस ना, कि उत्पल शेठ एंड ये सब इतने साल से अगर एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड अगर ये कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देयर माइट बी अ रीजन व्हाई दे माइट बी इन्वेस्टिंग इन दिस बिजनेस, कोई टेलविंड होगा या कुछ क्वालिटी होगी बिजनेस की। So this is a good framework to screen stocks. Again, I'm not saying कि invest कर लो directly, but screening करने का बहुत अच्छा तरीका है। And as मैं mean by say कि open offer is a good way of checking कि कौन सा new investor आ रहा है। But other good way to check is preferential issues. तो नॉर्मली आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो गई है चीज कि हर दूसरी कंपनी जब भी केपेक्स करना है तो वो लोग प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं टू मार्केट इन्वेस्टर्स। लाइक आशीष कचोलिया का रिसेंटली बहुत सारे प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट आपने नेम्स देखा भी होगा मेरी। तो आइडियली इफ कोई कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके कोई न्यू इन्वेस्टर ला रहा है जिससे वो अपने ग्रोथ के लिए केपेक्स के लिए यूज कर रहा है, तो एक तो आपको थॉट ये आना चाहिए कि मैनेजमेंट क्यों अपना स्टेक डाइल्यूट कर रहा है। तो देयर आर केसेस लाइक जिसमें मैनेजमेंट खुद प्रेफरेंशियल इशू में पार्टिसिपेट कर रहा है टू इंक्रीज या मेंटेन द स्टेक। तो एक तो आपको उसका भी नोटिस देना चाहिए कि चलो अच्छा मैनेजमेंट अपना स्किन द गेम बढ़ा रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर कोई मार्केट इन्वेस्टर प्रेफरेंशियल इशू में पार्टिसिपेट कर रहा है तो आपको वो स्टॉक में नोटिस करना चाहिए कि क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, ये फंड्स कैसे यूटिलाइज होने वाले हैं, इफ ग्रोथ में यूटिलाइज होने वाले तो क्या प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑल सच थिंग्स। तो इफ वन वुड हैव जस्ट फॉलो दिस फ्रेमवर्क कि कोई प्रेफरेंशियल इशू आएगा, कोई अच्छा इन्वेस्टर अगर करेगा मतलब सब्सक्राइब, तो मैं अगर बिजनेस को नोटिस करूंगा तो वन कुड हैव आइडेंटिफाइड राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स इन सितंबर 2021। एंड अभी 2023 में स्टॉक बहुत ऐसे हो रहे, ऐसे सब टॉक कर रहे बिकॉज ऑफ दिस बोट एंड ऑल सच थिंग, बट 2 साल पहले आपको बिजनेस के बारे में बेसिकली आइडिया लग जाता। एंड अभी तो इसके नंबर्स काफी अच्छे थे, बट देयर आर टाइम्स दैट बिजनेसेस में नंबर नहीं आ रहे होते, बट आफ्टर सम न्यू केपेक्स या ऐसा कुछ भी एक पर्टिकुलर ट्रिगर आता है जिससे नंबर्स फॉलो द सूट। बट टू आइडेंटिफाई या टू स्क्रीन अ स्टॉक, दिस टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स आर वेरी गुड। नाउ अगेन, अगर 2 साल पहले से मैंने आपको बताया कि मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं बोलूंगा कि आपने इस टाइप से बाय करा हो तो इस टाइम पे सेल कर दो आपको इतना परसेंट रिटर्न आता है, बट द आइडिया टू आइडेंटिफाई कि उस टाइम पे अगर कुछ पर्टिकुलर ट्रिगर हमको आइडेंटिफाई करा होता एंड अगर हमने तब बाय करा होता तो क्या रिटर्न आता हमारा। एंड नेसेसरी नहीं है कि आगे भी सेम रिटर्न आएगा, बिकॉज लास्ट 2-3 साल का जो बुल मार्केट था दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड। तो जरूरी नहीं कि ऐसा इतना 10x मूव इन 2-3 इयर्स हमेशा आएगा, बट इफ वी जस्ट स्टडी कि ये ट्रिगर के बाद क्या हुआ स्टॉक के साथ, तो दैट कैन बी अ गुड यूजफुल केस स्टडी। So one will see that in the last 2 years, इनका स्टॉक प्राइस का केकर इज 19%। दैट इज रीजनेबल और काफी अच्छा ही है, बट अगर आप देखोगे तो इनका जो अर्निंग्स केकर है दैट इज 38% ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इनने बेसिकली अपनी अर्निंग्स डबल करी है वाइल स्टॉक प्राइस खाली 30-40% से ग्रो करा है। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? सभी हम सबने देखा कि इनका बिजनेस जो है इसमें काफी मोड्स भी है, काफी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक भी है, जो दिखता है कि लॉन्ग टर्म में मे बी बिजनेस अच्छा करेगा। आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस अगेन, बट आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट इज अगर हमने खाली ये सोचा था कि बिजनेस की क्वालिटी इतनी अच्छी है और इतना छोटा है बिजनेस कि आगे ग्रोथ इतना अच्छा है कि अभी एक्स्ट्रा पे करेगी भी तो भी रिटर्न बन जाएगा, तो अगेन रिटर्न बनना है एक्चुअल में 19% बना है, बट अगर आप देखोगे तो अर्निंग्स की अगर वो 38%। एंड अगर पी डी रेटिंग देखोगे तो दैट इज फॉलन फ्रॉम 67 टाइम्स टू 45 टाइम्स। सो व्हाट दिस शोज कि अभी तो इनका अर्निंग्स 2 इयर्स में डबल हो गया है, बट व्हाट इफ इट डजंट? डिस्पाइट ग्रोइंग देयर अर्निंग्स बाय 2 टाइम, इनका स्टॉक प्राइस 19% से ग्रो कर रहा है। सो वन थिंग दैट इमीडिएटली कम्स टू माय माइंड इज ठीक है, क्वालिटी स्टॉक स्टडी करो, क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट भी करो, बट कीप अ माइंड की वैल्यूएशन भी थोड़ी रीजनेबल होनी चाहिए। अभी इस केस में स्टॉक प्राइस रिटर्न अच्छा दिया भी है, बट बहुत कम टाइम होता है कि स्टॉक प्राइस 2 इयर्स में डबल, मतलब अर्निंग्स 2 इयर्स में डबल हो जाती है, एनॉर्मली होती है काफी बार। तो एंड काफी बार ये भी होता है कि पी जो दिख रहा है 467 का वो एबनॉर्मल है, बेसिकली अर्निंग्स जो आगे आने ही वाली जिसकी वजह से पी डिलेट होगा। बट अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि बिफोर इन्वेस्टिंग वन इज टू बी कॉग्निजेंट कि कोई पी बहुत हाई दिख रहा है, लो दिख रहा है, तो अंडरस्टैंड द ड्राइवर्स बिहाइंड द पी। एंड इफ यू फील कि ये जो स्टेडी स्टेट पी है वो 67 टाइम्स का है,
तो अगर आपको ऐसा लगे चलो 10 years तक होल्ड करेंगे, अभी कोई टाइम पी आगे अर्निंग्स ग्रोथ इतनी आएगी कि अपने आप रिटर्न बन जाएगा। सो आई एम नॉट डिनाइंग दैट स्ट्रैटेजी, आपको करना है 10 years के हिसाब से आप करो, बट देन मेंटली प्रिपेयर रहो कि अगले 3 साल में अगर अर्निंग्स इन केस ज्यादा ग्रो हुई भी, तो भी बिकॉज ऑफ द इनिशियल हाई वैल्यूएशन इसका स्टॉक प्राइस रिटर्न तो अच्छा नहीं होगा। एंड ऐसा चांसेस भी है कि इन केस अर्निंग्स जो इसकी 30% पे ग्रो हुई है, अगर वो 15-20% पे भी ग्रो हुई होती तो उसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिरता। वाई? बिकॉज अभी तो ये हायर अर्निंग्स पे इसका पी 45 टाइम्स है। इमेजिन ये लोअर अर्निंग पे 45 टाइम्स होता, तो ये जो हमको 1000 रुपीज का दिख रहा है शेयर प्राइस, मे बी ये 700-800 ही होता, तो 2 साल तक इसका रिटर्न फ्लैट ही रहता, डिस्पाइट ग्रोइंग द earnings at 19-20% for 2 years. So again, the idea is study quality stocks, invest in quality stocks, but keep a mind at valuations, because at the end of the day, margin of safety does matter. Not only in deriving your own returns, but also holding on to the stock when downfall comes. So yeah, I'm done with Raga productivity enhancers. So I think we have taken 2 companies. If anyone have any questions, we can take. So Dhruv, I guess you can continue. Okay, If sure. we'll have any questions, I'll try to answer on the chat box, and maybe Sure, sure, towards the sure. end we'll take all the questions. Okay. Sure, sure, sure. Yeah, just तो यार अभी तक जो भी कंपनी में बात कर रहे हैं सबका बुल केस ही मैं बता रहा था कि इसमें इतना अच्छा ट्रिगर आया जिसकी वजह से आपने बाई करना कर सकते थे। बट अब मैं ऐसे सिचुएशन टॉक करूंगा जहाँ पे आपको बाई नहीं करना चाहिए था, या बाई करते तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं आता। एंड फॉर मी, मैंने अभी इसमें 6 कंपनीज प्रेजेंट करी है टोटल, अभी आगे और 2 कंपनी आएगी, बट वन ऑफ द बेस्ट केस स्टडीज गल्फ ऑयल का। वाई? बिकॉज इट टेल्स यू कि what to avoid rather than just focusing on returns part. So knowing what not to do is more important than knowing what to do, as we have all often seen. So again, the fifth framework is understanding the key drivers of terminal value. Because if you are a long-term investor, then at the end of the day, आपकी terminal value आपके returns काफी ज्यादा affect करेंगे. Now, firstly, but what do I mean by terminal value? So again, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा दिखने में, पर आपको मैं बेसिक वे में समझाने की ट्राई करता हूँ। सो कोर पार्ट ऑफ वैल्यूएशन इज कि आपके जो फ्यूचर में कैश फ्लोज आने वाले से आप समझ रहे हो कि अगले 5 to 10 years में इसके कैश फ्लोज 10 या 15% पे ग्रो होंगे, बट उसके एक टाइम बाद आपका जो कंपनी है वो इंडस्ट्री या फिर जो आपका ओवरऑल कंट्री का जो ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा पे ग्रोथ नहीं दे पाएगी। वाई? बिकॉज आप एक्सरसाइज ट्राई करना कि सपोज ऐसा है कि वर्ल्ड आफ्टर 10 to 15 years या फिर जो आगे जाके 2-3% भी ग्रो करेगा स्टेडी स्टेट पे, अभी हमारा ग्रोथ पीरियड चल रहा है, सपोज हम ऐसा अज्यूम करते हैं, एंड आफ्टर 10-15 years में वर्ल्ड 3% पे ग्रो करेगा टिल परपेचुइटी। एंड अगर मैं सोचता हूँ कि नहीं नहीं मेरी कंपनी तो बहुत स्मॉल है, ये 4% पे भी ग्रो कर पाएगी, तो अगर आप ऐसा सिचुएशन अज्यूम करते हो तो यू विल ऑब्जर्व कि आपकी जो कंपनी की एंड वैल्यूएशन निकलेगी ना वो इतनी हाई होगी कि ओवरऑल वर्ल्ड की टोटल वैल्यूएशन जितना हो जाएगा। बिकॉज कंपाउंडिंग ऐसा होगा, वो 1% की गैप से आपका ओवरऑल वैल्यूएशन बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए अल्टीमेटली अज्यूम कि अगले 5-10 साल में आपका ग्रोथ अच्छा आएगा, 15 साल में भी ग्रोथ अच्छा आएगा, एंड उसके बाद बाकी जब की वैल्यूएशन होगी जो स्टेडी स्टेट वैल्यूएशन होगी, जो इंडस्ट्री या फिर जो जीडीपी ग्रोथ रेट पे वैल्यूएशन होगी, उसे हम टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। सो बेसिकली इफ यू कैन सी फ्रॉम द स्लाइड, ये जो सपोज मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि अगले 5 साल में कंपनी विल ग्रो एट 5 to 10%, तो मैं उसको करंट रेट पर डिस्काउंट करूंगा बाय वन पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट, जो बहुत टेक्निकल होता है, मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बट बेसिकली दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट यू आर बेसिकली इनकरिंग टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। सिंपल वे में सोचो तो आप ऐसा क्या रिटर्न चाहते हो एक बिजनेस में, सपोज मैं चाहता हूँ कि 12% रिटर्न आना चाहिए मेरे बिजनेस में, तो आइडियली मेरा स्टॉक को अगर 12% रिटर्न मुझे देना है तो मेरा डिस्काउंट रेट अगर मैं 12% डालूंगा, उससे जो वैल्यूएशन आएगी वो करंट स्टॉक प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए, तो अगर मैं बाई करूंगा तो मेरा 12% जितना रिटर्न बन पाएगा। अगेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसे कैलकुलेट होते हैं, बट जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंट रेट को अगर आप ऐसा समझो कि एक हर्डल रेट आपका कि इतना रिटर्न तो आना ही चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट में, कि अगर आप 12% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो फ्यूचर में और उसके इतने कैश फ्लोज आएंगे, तो उसकी करंट वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए जो जस्टिफाई करता है फ्यूचर के 12% रिटर्न। So that is the discount rate. But what is terminal value?
So you have seen कि इधर अगले 4-5 साल में आई एम प्रोजेक्टिंग कि अच्छा 10-15% पे ग्रोथ आएगा मेरा, बट आफ्टर 5 years आई कैन प्रोजेक्ट कि इसका कितना ग्रोथ रेट आएगा. सो बेसिकली आई एम अज्यूमिंग कि अब ये स्टेडी स्टेट पे ग्रो है, दैट इज जो जीडीपी ग्रो हो रही है उस रेट पे मैं ग्रो होऊंगा, 3% में ग्रो होऊंगा फॉर एग्जांपल. सो उससे जो वैल्यू आएगी दैट इज टर्मिनल वैल्यू. बट वन वुड हैव सीन द कैवियट कि मैंने अज्यूम कर लिया कि ये इंडस्ट्री या फिर जो जीडीपी है उसके रेट पे ग्रो होगा, दैट इज 3% पे ग्रो होगा. बट व्हाट इफ इसमें ऐसा कुछ डिस्ट्रप्शन आ जाता है जिससे आगे जाके ये 3% पे भी ग्रो नहीं होगा, 2%, 1%, मे बी इवन डिग्रो होगा. मे बी आगे 10-15 साल बाद जाके ये बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इंडस्ट्री में तो डिग्रोथ आ जाएगा जिससे इसका टर्मिनल वैल्यू ही कुछ नहीं होगा. तो इन दैट केस आप कैसे वैल्यू करोगे? So this is the interesting case study that I want to talk about, and this is why टर्मिनल वैल्यू के अगेन बहुत सारे प्रोपोनेंट्स होते हैं कि आगे 10-15 साल में कैसे कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा, हम कैश फ्लो कैसे प्रोजेक्ट करें, डिस्काउंट रेट का 1% ऊपर नीचे से वैल्यूएशन पे इतना फर्क पड़ सकता है. जैसे मैंने अभी टॉक करा कि अगर आपने 3% का अगर 4% भी ले लिया होता तो आपका वैल्यूएशन बहुत डिस्टॉर्ट होता. बट बाई अंडरस्टैंडिंग द की ड्राइवर्स बिहाइंड टर्मिनल वैल्यू कि आपके लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री और कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्या वो आगे 10-15 साल बाद भी जाके सर्वाइव कर पाएगा जिससे वो करंट वैल्यूएशन जस्टिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता. तो उससे आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क काफी इंप्रूव हो जाएगा. उससे क्यों इंप्रूव होगा? अगर आप कोई कंपनी देख रहे हो जो 40 के पी में ट्रेड कर रहा है और कोई आप कंपनी देख रहे हो जो 8 के पी में ट्रेड कर रहा है, तो आप नेचुरली सोचोगे 8 पी इज चीप, 40 पी इज एक्सपेंसिव. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि वो जो 8 पी जो है उसका जो ये स्ट्रॉन्ग मतलब जो ग्रोथ रेट आ रहा है, हाई ग्रोथ रेट, वो हम खाली 4 साल के प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं और उसके बाद से उसका टर्मिनल वैल्यू आ जा रहा है, दैट इज स्लो ग्रोथ पीरियड. एंड ऐसा एक बिजनेस है जिसका मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले 10-15 साल तक 20 साल तक ग्रो करता रहेगा हाई रेट पे 10-15% में, और उसके बाद टर्मिनल वैल्यू आएगा. तो अल्टीमेटली जितना ज्यादा हाई ग्रोथ रेट आएगा उतना हाई ज्यादा वैल्यूएशन आएगा. तो जो कंपनी ज्यादा टाइम तक हाई ग्रोथ कर पाएगी अल्टीमेटली उसका इनिशियल वैल्यूएशन भी हाई होगा. तो जस्ट बाय फोकसिंग ऑन दिस टर्मिनल वैल्यू कंसेप्ट कि कितने टाइम बाद कोई कंपनी का टर्मिनल वैल्यू आएगा, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा, दैट इज कितने टाइम बाद कंपनी ग्रो करना बंद कर जाएगी या मे बी इवन डीग्रो करेगी. तो उससे आप वैल्यूएशंस को बेटर वे में जज कर सकते हो, समझ सकते हो कि ऐसा नहीं कि 40 पी एक्सपेंसिव 8 पी थी. यू विल ट्राई टू फोकस कि क्यों 8 पी है या क्यों 40 पी है. So that is the core idea behind understanding the key drivers of terminal value. So again, what does this start with? ये कंपनी at one point was trading at 35 to 40 per times का P. And अभी अगर आप देखोगे तो उसका खाली 8 to 10 times की P पे ट्रेड कर रहे हैं. So what did change? क्यों 40 P पे ये एक्सपेंसिव नहीं था, क्यों 30 P में 10 P में चीप नहीं है? So by understanding the business, the key growth drivers, the terminal value drivers, you will understand कि ये 40p तब क्यों था, अभी 10p तब क्यों है. तो हम ये जो ब्लैंकेट मतलब फ्रेमवर्क यूज करते हैं, इसका मीडियम पी 20 टाइम्स रहा है, अभी 8 टाइम या 10 टाइम पी है तो सस्ता है तो बाय कर लो. तो वैसा मिस्टेक्स नहीं करोगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस केस स्टडी ऑफ दिस. फिर वन विल सी ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड इसका जैसे लास्ट 5 years का भी आप देख लो, उसका शेयर प्राइस इज डी ग्रोन बाई 8% केगर. 8% में हर साल गिरा ही है. और अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो इसका रेवेन्यू ड्यूरिंग द सेम पीरियड हैज ग्रोन बाई क्लोज टू 15%, वाइल इसके प्रॉफिट भी 8 to 10% पे ग्रो करे. Yet इसका शेयर प्राइस हैज नॉट ओनली बीन एबल टू बी एट पार विद द अर्निंग्स ग्रोथ, बट इट हैज एक्चुअली डीग्रोन. तब ये जो फ्रेमवर्क यूज बोलते हैं कि इसका अर्निंग ग्रोथ 8% आ रहा है तो प्रॉफिट ग्रोथ भी या फिर जो शेयर प्राइस ग्रोथ आएगा वो भी 8-10% आएगा, वो हमको मालूम पड़ा कितना फ्लॉड है, क्योंकि इसका जो टर्मिनल वैल्यू है वो इसका काफी ग्रोथ या जो करंट प्राइस मूवमेंट है वो डिटरमाइन भी कर रहा है. सो अगेन टू समराइज, हम लोग जो पास्ट का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रह चुके हैं, सपोज 10% रहा है या 15% रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी सी की 8 टाइम्स पी या 10 टाइम्स पी है उसकी वजह से बाय करें, तो दैट इज अ वेरी फ्लॉड वे ऑफ बाइंग अ स्टॉक, बिकॉज उसका फ्यूचर का क्या प्रोस्पेक्ट है वो काफी इसका प्रेजेंट वैल्यू डिटरमाइन करते हैं. तो ये हमको दिख रहा है बिजनेस से कि जो पहले 35 टाइम्स का बिजनेस था वो सेम 10 टाइम्स पी पे ट्रेड कर रहा है. एंड आई वोंट स्टिल से कि 35 टाइम्स वर एक्सपेंसिव या 8 टाइम्स वर चीप. सो फर्स्टली अबाउट द कंपनी.
So as one knows कि गल्फ ऑयल इज अ हिंदुजा ग्रुप बेस्ड कंपनी. तो हिंदुजा ग्रुप बहुत बड़ा बिजनेस है जिनका गल्फ गल्फ के नाम से एक ऑयल बिजनेस है. उनका एक लुब्रिकेंट डिवीजन इज गल्फ ऑयल. इनका अशोक लेलैंड करके भी बिजनेस है जो लिस्टेड है, बहुत बड़ी कंपनी है. यानी बिजनेस का बहुत अच्छा पेडिग्री है और मार्केट में भी अच्छा इंप्रेशन है सच. तो मैनेजमेंट की पेडिग्री भी है एंड ये बिजनेस है कंसिस्टेंटली अपने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहा है. सो जस्ट टू गिव एन आइडिया, अगर लास्ट 10 साल में इंडस्ट्री 5-7% में ग्रो हुई है, तो दिस कंपनी हैज ग्रोन बाय एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स द इंडस्ट्री. बिकॉज एक तो ये प्राइवेट प्लेयर है, तो अगेन वैल्यू माइग्रेशन का सिचुएशन या फ्रेमवर्क इधर भी अप्लाई करता है कि इसने जो पब्लिक कंपनी थी, जो गवर्नमेंट के ऑयल कंपनी थी, उससे इसने शेयर ले लिया, तो उसकी वजह से ये इंडस्ट्री ज्यादा रेट पे ग्रो कर पाया. तो अगेन एक तो प्रमोटर पेडिग्री है, इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रहा है. आरओई भी उसके देखोगे तो 20-25% के कंसिस्टेंटली मेंटेन करे इसने. तो आरओई भी काफी अच्छे है इसके, ग्रोथ भी अच्छा रह चुका है, कैपेसिटी भी इनकी थोड़ी बहुत एक्सपांड हुई है. तब ओवरऑल देखोगे ना सब बिजनेस में अच्छा ही लग रहा है इसका. और न्यू प्रोडक्ट भी हम डेवलप कर रहे हैं, R&D में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. इनकी ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी है. लाइक गल्फ ऑयल इज अ बिग ब्रांड. आप सीएससी की जर्सी देखोगे तो इनके लास्ट 10-15 साल से प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स है गल्फ ऑयल. तो इसके वजह से इनका ब्रांड रिकॉल भी काफी अच्छा है. अब रिवेन्यू देखो तो लास्ट 10 साल में 13% पे ग्रो हुआ है, प्रॉफिट 24% पे ग्रो है, एबिटा 17% पे ग्रो है. Yet shareholders have made literally zero returns post the listing of this stock. अगर आपने डीमर्जर के बाद बाय करा होता है इधर, तो आपने लिटरली जीरो रिटर्न बनाया है सर. बट अगेन अनदर इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क, डीमर्जर डज क्रिएट वैल्यू. So I won't go deep dive into what are demergers and why they create value, but just to summarize कि demerger का basic framework ये होता है कि two companies individually are more valuable than combined. Why is that? तो जनरली मार्केट जो स्पेशलाइज अंडरटेकिंग होती है उसको बेटर वैल्यूएशन देता है वर्सेस अ कंसोलिडेटेड बिजनेस, बिकॉज उनको लगता है कि कैपिटल मिस एलोकेशन के चांसेस स्पेशलाइज अंडरटेकिंग में कम होते हैं. सेकेंडली, आप उसकी जो बिजनेस है, उसके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, उसको आप ढंग से प्रोजेक्ट कर सकते हो आगे जाके. थर्डली, जो बिजनेसमैन होगा वो इंडिविजुअल सेगमेंट में ज्यादा अच्छे वे में फोकस कर पाएगा. फोर्थली, कोई बिजनेस है जो लॉस मेकिंग है, जो कंबाइंड एंटिटी में उसका कुछ वैल्यूएशन ही नहीं आ रहा. आज सपोज एक बिजनेस है जिसका 100 रुपीज की मार्केट, 100 रुपीज का सपोज प्रॉफिट है, एंड उसका एक बिजनेस है और सपोज वो 100 रुपीज के प्रॉफिट्स में मार्केट उसको 10 का पी दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, एंड उसमें दो बिजनेसेस है, दोनों में सिमिलर एसेट इन्वेस्टमेंट है, दोनों के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं. बट एक बिजनेस का प्रॉफिट 110 रुपीज है, वाइल दूसरे का प्रॉफिट इज -10 रुपीज. तो बिकॉज ऑफ दैट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 100 रुपीज दिख रहे हैं. बट वॉट इफ आई डीमर्ज दोज बिजनेसेस? तो इफ आई जस्ट अज्यूम कि वो 10 का पी विल स्टे इंटैक्ट, तो 110 रुपीज का जो था हमारा अर्निंग्स, उसमें 10 का पी लगा, तो दैट इज 1110. तो मतलब उसके एक तो हमारी वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ गई कि हमने 100 के ऊपर 10 का लगाया, तब 1000 की वैल्यूएशन थी, अभी 1100 की वैल्यूएशन आ गई. बट ऑल्सो जिस बिजनेस का पैट हुआ जीरो, बट स्टिल उसमें कुछ तो एसेट इन्वेस्टेड है ना. तो मार्केट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एसेट्स, मतलब इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अर्निंग्स, वो कुछ एसेट की वैल्यूएशन देगा. तो इट वुड बी मोर देन जीरो. सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि इसमें 200 रुपीज के एसेट इन्वेस्टेड है, उसमें अभी नेगेटिव प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बट स्टिल अगर वो एसेट की 100 की, मैं खाली 200 की 50 रुपीज की मैं मार्केट वैल्यूएशन देता हूँ, तो 1100 प्लस 50 इज 1150, एंड उसकी जो प्री डीमर्जर वैल्यूएशन थी दैट वाज ओनली 1000 रुपीज. तो आप देखोगे दिस इज अगेन जस्ट अ वेरी बेसिक एग्जांपल, इसमें और बहुत सारे कैवेट्स होते हैं, बट जस्ट टू शो यू कि क्यों काफी बिजनेसेस अलग होकर ज्यादा वैल्यूएशन गैदर कर सकते हैं वर्सेस कंबाइंड बिजनेस. तो बिजनेस ने आउट ऑफ नोवेयर 1000 रुपीज की वैल्यूएशन को 1150, दैट इज मोर देन 15% अपनी वैल्यूएशन बढ़ा दी आउट ऑफ नोवेयर. एंड इसमें और काफी सारे कैवेट्स होते हैं जो हमने एक अपने पुराने वेबिनार ऑलरेडी डिस्कस करा है, तो यू कैन अगेन वॉच दैट. आई थिंक तारिक जी ने वो वेबिनार लिया था, एंड विकास कस्तूरी जी का भी एक वेबिनार है रिगार्डिंग दैट. So if anyone wants to understand that type of framework, so I will highly urge कि आप वो webinar देखना. But in this case, let's just stick to this case. तब देखोगे कि pre demerger इनका total market cap was around 1000 crores. But after demerger, within 1 year, इनका जो total market cap होता separate unit का मिला के, that is close to 3000 crores. So within 1 year, इनने 3 times
वैल्यूएशन बढ़ा दी अपने शेयर होल्डर्स के लिए। सो अगेन दिस इज अनदर यूजफुल फ्रेमवर्क टू कीप ट्रैक ऑफ कि कोई कंपनी अगर डीमर्जर ला रहे हैं और आपको दिख रहा है कि कोई एंटिटी है जिसकी सेपरेट वैल्यूएशन वुड बी हायर देन द कंबाइंड वैल्यूएशन, सो दैट इज अनदर गुड फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई न्यू स्टॉक्स। बट अगेन हियर्स द कैवियट, इसने एक साल में तो 3 टाइम्स वैल्यू क्रिएट कर लिया अपने शेयर होल्डर्स के लिए, बट उसके बाद से आप देखोगे तो लास्ट 10 साल में लिटरली स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, बट अभी करेंटली वो इधर से होल्ड करता आफ्टर डीमर्जर तो उसने जीरो वैल्यू बनाई है अपने इन्वेस्टमेंट में। तो व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज दैट डीमर्जर डज क्रिएट वैल्यू इन शॉर्ट पीरियड, दैट इज आफ्टर डीमर्जर जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन करा, तो उसकी वजह से टेम्परेरी 1-2 साल में वैल्यूएशन काफी क्रिएट हो सकती है। एंड काफी बार ऐसा भी होता है कि जैसे बिजनेसेस सेपरेट हो गए तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ सम पर्टिकुलर बिजनेसेस मार्केट उनको बेटर वैल्यूएशन देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आफ्टर डीमर्जर द स्टॉक डज वेरी वेल। बट दैट माइट नॉट ऑलवेज बी द केस because once a demerger is done and after a particular period has passed, say 6 to 12 months, उसके बाद जो बिजनेस के जो फंडामेंटल्स हो गए वो आपके ओवरऑल रिवेन्यूज या जो अर्निंग्स है या फिर जो ओवरऑल टोटल शेयर होल्डर रिटर्न्स है वो ड्राइव करेगी। So demerger does create value in short term, but in long term the fundamentals drive the valuation. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए assume करना, क्योंकि आजकल जैसे मैं भी डीमर्जर में लास्ट 1.5 ईयर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, तो मेरे माइंड में भी एक फॉल्ट था कि तो डीमर्जर है इमीडिएटली बाय कर लो वैल्यूएशन आ जाएगा, बट अल्टीमेटली जब बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं वही वैल्यूएशन आने वाले हैं, एंड गल्फ ऑयल इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। So with that being said कि अब मैंने जैसे एक्सप्लेन करा कि इनके लास्ट 10 इयर्स में जो इनका पी रेटिंग है, डी रेटिंग है, फ्रॉम 35 टाइम्स टू 8 टाइम्स या 10 टाइम्स क्यों हुआ? ये गैप क्यों है अर्निंग्स ग्रोथ में एंड प्राइस डी ग्रोथ में? सो लेट्स आइडेंटिफाई दैट। फर्स्टली, कोई भी इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क इज पोर्टर 5 फोर्सेस। उसमें बेसिकली माइकल पोर्टर ने एक अपनी बुक में फ्रेमवर्क डिस्कस करा था टू अंडरस्टैंड एनी बिजनेस की इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्ट्स, फीचर्स, कि आप कैसे बिजनेस को स्टडी कर सकते हो, कैसे जज कर सकते हो कि आगे इंडस्ट्री में क्या इश्यूज आ सकते हैं या फिर क्या पॉजिटिव्स है बिजनेस में। सो ही बेसिकली segregated it into 5 parts. First part was high competitive intensity. So basically इसका जो की इंडस्ट्री है दैट इज लुब्रिकेंट्स इंडस्ट्री। तो ये सेम इंडस्ट्री में कैस्ट्रॉल भी इज वन मेजर प्लेयर, इंडियन ऑयल इज अनदर मेजर प्लेयर, तो ऐसे काफी सारे प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में। तो कोई ये इंडस्ट्री स्टडी करेगा तो वन विल नोटिस कि लास्ट 5 to 7 years में ऑल द रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन गुड, इनके मार्जिन्स काफी फॉल हुए, एंड दैट इज बिकॉज जो कंपिटिटिव इंटेंसिटी है इनके इंडस्ट्री में दैट इज वेरी हाई। उसकी वजह से ये लोग प्राइस वॉर तो नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, बट उसकी वजह से देखो इनको थोड़ा अपना प्राइस कट करना पड़ रहा है या फिर इनके जो कॉस्ट बढ़ रहे हैं ये अल्टीमेटली पास ऑन नहीं कर पा रहे टूवर्ड्स द कस्टमर्स, जिसकी वजह से प्राइसिंग वॉर्स हो रहे हैं और कंपिटिटिव इंटेंसिटी इज वेरी हाई, एंड अगेन लो बार्गेनिंग पावर, जहाँ पे आपका जो बेसिक रॉ मटेरियल दैट इज अ क्रूड डेरिवेटिव एंड आपके जो कंपटीटर है वो सेम टाइप का ऑयल बना रहे हैं या लुब्रिकेंट बना रहे हैं एंड सब सिमिलर स्केल के हैं, तो अल्टीमेटली आप ग्रो भी कर लोगे बट आप उनसे मार्जिन में नहीं लड़ पाओगे। तो लास्ट 5 साल में मार्जिन भी इस इंडस्ट्री गिर रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट प्लेयर्स के। देन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। सो इवन दो ये इंडस्ट्री के आगे मेरे को लगता है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उतने ज्यादा अच्छे नहीं होगी जितने लास्ट 5-10 years में थे, बट बिकॉज इनकी जो केमिस्ट्री है दैट इज नॉट वेरी एडवांस्ड, एंड जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है जिनका ऑलरेडी आफ्टर मार्केट सेगमेंट दैट इज जिनका कोई ऑलरेडी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो उनके लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाना मार्केट में इज नॉट अ वेरी मेजर थिंग इफ दे हैव गुड ब्रांड रिकॉर्ड। तो जैसे लूमेस करके बहुत बड़ा एक ऑटो एंसिलरी प्लेयर है इन इंडिया, एंड उनका एक पर्टिकुलर कंपनी है बाय द नेम ऑफ लूमेस ऑटोटेक विच इज अगेन अ वेरी बिग प्लेयर इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो वो लोग रिसेंटली एंटर कर रहे हैं लुब्रिकेंट स्पेस में, एंड काफी सारे जो अदर ऑयल प्लेयर्स है जिनके खुद के वो होते हैं ऑयल गैस स्टेशन होते हैं, वो लोग भी खुद से लुब्रिकेंट बनाते हैं ताकि वो डायरेक्टली कोई भी आ रहा है पेट्रोल भरा रहे तो उसको उधर ही लुब्रिकेंट सेल कर पाए। तो उनके पास नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एडवांटेज है, बट ये लोग भी लुब्रिकेंट्स में एंटर कर रहे हैं बिकॉज इनको दिख रहा है कि थोड़ा लुक्रेटिव है इनके लिए, एंड इतना ज्यादा कॉस्ट या फिर कैपिटल इंटेंसिव नहीं है बिजनेस। तो उसके अंदर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स भी है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट भी है। नाउ रिसेंटली आई वाज स्टडीइंग अ कंपनी जिनका कोर प्रोडक्ट इज पीईबी, दैट इज पॉली आइसी ब्यूटाइलिन।
So during COVID period, जो बेस ऑयल होता है, that is the key raw material for lubricant producers, वो थोड़ा स्केर्स हो गया था, बिकॉज ऑयल खुद बहुत स्केर्स हो गया था, इसलिए प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे ऑयल के ड्यूरिंग कोविड पीरियड. So during that time, this polyisobutylene was also being used as a lubricant directly. So again, not just Lumex या फिर ऐसे अदर प्लेयर्स है जो lubricant ला रहे हैं, उनसे इनको प्रेशर है, बट जो और सब्स्टिट्यूट्स है जैसे polyisobutylene, उनसे भी पोटेंशियल इनको रह सकता है टेंशन कि आगे ये प्रोडक्ट भी किसी lubricant की तरह यूज हो सकते हैं. So again, there is threat of substitute as well. And I've already mentioned, industry rivalry is very strong because आगे growth prospects are come, while players are big, they have large coffers, ROEs are already very high, so they can afford to lose some return on their equity because ultimately इनको profits growth करना है. तो cash इनका already बहुत पड़ा है ऐसे. So because of that, the industry prospects look a bit uncertain to me. Like future के भी and current competitive intensity also doesn't give me high confidence. So this is one of the major reasons कि भाई लास्ट जो 5-10 साल में ये जो 2 to 3 टाइम्स पे ग्रो करा वर्सेस इंडस्ट्री, आगे उतना इजी नहीं होगा ये कंपनी के लिए. तो उसकी वजह से उसकी टर्मिनल वैल्यू अफेक्ट होगी. बट देयर आर सम अदर एस्पेक्ट्स एज वेल. लाइक व्हाई एम आई कंटिन्यूअसली सेइंग कि ये जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ एस्पेक्ट्स है वो काफी अनसर्टेन है. सो द आंसर इज ईवी. अभी आगे ईवी का एज वी आर सीइंग की डिस्ट्रप्शन हैज बीन वेरी रैपिड. तो अगर आप ये कंपनी को स्टडी करोगे, so 3-4 years पहले अगर if you have studied this company, तो management was completely discounting this EV threat. जैसे कि 10-15 ऐसे तो उसका कोई चांस ही नहीं आने का. Excuse me. और अगर आएगा भी तो ये सारे पैसेंजर व्हीकल आइस व्हीकल्स जो बोलते हैं उसको कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा. तो बिकॉज ऑफ दैट दे कंप्लीटली इग्नोर दिस थ्रेट एंड नाउ दे हैव डेवलप्ड सर्टेन प्रोडक्ट्स जिसका आगे मे बी यूज केस आ सकता है, जिसका मैं बात करूंगा. बट बेसिकली जिस जैसे ही ईवी का ग्रोथ आएगा तो अल्टीमेटली जो इंजन ऑयल होगा उसका डिमांड कम होगा. एंड इंजन ऑयल में लुब्रिकेंट्स डलते हैं, तो एज इंजन ऑयल का डिमांड कम होगा, लुब्रिकेंट ऑयल का डिमांड कम होगा. एंड अल्टीमेटली जो आगे ईवी का थ्रेट होगा उसके से 10-15 साल बाद लुब्रिकेंट्स ग्रो ही नहीं कर पाए मे बी, इफ ईवी का थ्रेट इतना ज्यादा अच्छा हो. सच वन कैन सी कि मैं अगले 10-12 साल बाद इनका ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज ईवी का क्या थ्रेट आ सकता है इनका बिजनेस में वो मैं सर्टन नहीं कर सकता. सो बिकॉज ऑफ दिस एज वेल इनका टर्मिनल वैल्यू गेट्स हाईली अफेक्टेड. क्या आगे इनका ग्रोथ आएगा भी या नहीं आएगा वही सर्टन नहीं है. एंड ये जो इंडस्ट्री है बिकॉज ऑफ ऑल दिस कम्पिटिटिव इंटेंसिटी एंड जो मैच्योरेशन में पहुंच चुके हैं, द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ओनली 2-3% रेट इन द नेक्स्ट 10 years. पास्ट में कंपनी बहुत अच्छी वे में ग्रो करे है, आगे भी मे भी ग्रो कर ले, बट जो लुब्रिकेंट सेगमेंट है ये 2-3 टाइम्स भी अगर ग्रो करता है तो ये अपने ओवरऑल रिवेन्यूज को फ्रॉम दैट लुब्रिकेंट डिविजन can't grow more than 8-10% in the next 10-15%. And this is a bull case scenario. So again, इससे भी इसका टर्मिनल वैल्यू ओवरऑल वैल्यूएशन इफेक्ट होता है क्योंकि उसका पी कम दिखता है अभी. एंड इन्वेस्टमेंट इनके जो ईवी वैल्यूएशन में लोग करने की ट्राई कर रहे हैं, लाइक दे हैव रिसेंटली इन्वेस्टेड इनटू सम ईवी स्टार्टअप्स, जिससे ये लोग जो गैस स्टेशन होता है वैसे ईवी स्टेशन होते हैं, चार्जिंग स्टेशन, उसमें दे आर ट्राइंग टू utilize their extensive capitals which they already have into that sort of business. But again, it is a highly nascent stage वाला business. तो आगे से क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रहेगा, कैसे इसके इकोनॉमिक्स बनते हैं वो हमको अभी से नहीं मालूम है. तो अगेन उधर से भी इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में हाई अनसर्टेनिटी आती है. एंड लास्टली इसका जब डिविडेंड पे आउट दिखोगे तो इसका लास्ट 5-10 years से इसका डिविडेंड पे आउट हैज बीन क्लोज टू 50-60%, either in the form of high dividends या फिर बायबैक. So as I have mentioned before as well, ग्रोथ के दो की एस्पेक्ट्स होते हैं. एक तो आप कितना री इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस में और कितना हाई रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो. तो एज वी हैव सीन कि इनका जो इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स है दैट शोकेस की आगे मे बी इनके जो आरओई अभी दिख रहे हैं 20-25% के, आगे दे माइट नॉट बी एबल टू मेंटेन दैट. तो इनके आरओई गिर सकते हैं एंड इनका जो री इन्वेस्टमेंट है इनके कोर बिजनेस में वो काफी कम हो रहा है. तो जिसकी वजह से इनकी अल्टीमेट जो ग्रोथ होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से इनकी वैल्यूएशंस में भी मार्केट अभी कम समझता है. अभी इनने न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करे, जैसे ये लोग ईवी के फ्लूइड्स ला रहे हैं जो दे थिंक कि मे बी लुब्रिकेंट से थोड़ा डिमांड चला जाएगा. जो इंडस्ट्री ऑयल जो इंजन ऑयल था दैट इज ईवी बढ़ेगा, इंजन ऑयल का डिमांड कम होगा तो लुब्रिकेंट का डिमांड कम होगा. बट व्हाट इफ दे डेवलप सम टाइप ऑफ ईवी फ्लूइड्स जो ईवी में भी कंटिन्यूअसली यूज होते रहेंगे. तो रिसेंटली दे हैव डेवलप सम टाइप ऑफ फैक्ट्री फिल्स जो फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं फॉर डेवलपिंग ईवी व्हीकल्स. तो उसमें इन लोगों का थोड़ा बहुत डिमांड आ रहा है, बट अगेन
10-15 years बाद ईवी लुब्रिकेंट्स यूज करेगी या नहीं करेगी, दैट इज हाईली अनसर्टेन. तो आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी अभी चीप है या एक्सपेंसिव है, बट आगे इसका फ्यूचर काफी अनसर्टेन है, जिसकी वजह से भी वैल्यूएशन इसकी कम है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चलो लो पी है बाय कर लो, हाई पी है सेल कर लो, इफ यू जस्ट फोकस कि क्यों लो पी है या क्यों हाई पी है, एंड क्या चेंज हो सकता है जिसका ये जो लो पी है वो हाई पी में कन्वर्ट हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ इनका जो ईवी वैल्यू चेन में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाए, ये लोग उसमें प्रॉफिट्स कर पाए, एंड इनका जो डिविडेंड पे आउट हाई दिख रहा है हमको, दैट इज इनका जो री इन्वेस्टमेंट रेट है टुवर्ड्स देयर कोर बिजनेस वो कम हो जाए बाय इन्वेस्टिंग इनटू अदर ग्रोथ एवेन्यूज. तो इनका जो पी दिख रहा है 8 टाइम्स का, वो मे बी 10-20% बढ़ जाए, मे बी 15 टाइम्स 20 टाइम्स भी हो जाए, जिसके वजह से इनका जो शेयर प्राइस ग्रोथ है वो काफी अच्छा हो भी सकता है. एंड वी हैव सीन इन द गोल्डियम्स केस कि कैसे कोई कंपनी ने अपने जो एक्स्ट्रा जो कैश पड़ा था इन्वेस्टमेंट से, जैसे टू गिव एन ओवरव्यू, व्हेन वी स्टडीड दिस बिजनेस, इसका मार्केट कैप वाज अराउंड 2000 crores while it had cash reserves of around 500 crores. So what if उसने वो 500 crores की जो कैश रिजर्व है उसको ढंग से यूटिलाइज करा टुवर्ड्स हाई ग्रोथ, हाई मार्जिन, हर आरओई सेगमेंट, तो मे बी इसमें भी सेम गोल्डन का सिचुएशन प्ले आउट हो सकता है. Now again, I'm not invested in this business, but I'm tracking because मैंने पास्ट में ट्रिगर देखा है. But at the same time, I'm not buying this business कि 8 का पी है तो बाई कर लो. Why? Because I understand इसका जो फ्यूचर का टर्मिनल वैल्यू है, that is very uncertain. तो मे बी जो इसका अभी का वैल्यूएशन है, that might be justified. And ये चेंज हो सकता है सिचुएशन या सिनारियो. इफ ये ईवी फ्लूइड्स और ये सब जो ईवी वैल्यूएशन है, इसमें लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं. So that was the idea behind this. I think we can take a few questions. Yeah, should I continue? I think, Dhruv, you can continue. Okay, sure. There are Because hardly there- any, there are hardly any question related to the presentation. Most of the questions which I see is on other businesses which we have not covered in this presentation. So you Okay. can probably complete it and then we'll take up all the Q&A towards Sure, the end. sure. Now, coming to the sixth framework. So that is change in business model. So what do I mean by change in business model? So often, whenever we see कि कोई company is making some particular sales growth या profit growth, but sometimes we see कि इन्हें एकदम से कुछ abnormal growth in margins या फिर sales में record करें. So normally what I used to do was कि I used to completely ignore that business. Why? Because मेरे को लगता है ये कुछ cyclical business है या फिर कुछ COVID led push हुआ है. Especially अगर आप देखो ये pharma business है. तो ड्यूरिंग 2020 पीरियड ओनली इसका जो अर्निंग्स प्रॉफिट ग्रोथ जो था वो बहुत एकदम से बढ़ गया था. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आई कम्प्लीटली इग्नोर दिस बिजनेस थिंकिंग कि ये सिक्लिकलिटी है या फिर वन टाइम रेवेन्यूज है. बट मैंने तब अगर ज्यादा फोकस दिया होता तो आई वुड हैव अंडरस्टैंड कि ये टेम्पररी नहीं है, दिस माइट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड, बिकॉज इनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें ही चेंज आ गया. सो व्हाट इज दिस बिजनेस मॉडल चेंज, आई विल टॉक अबाउट दिस. एंड पहले just to give you an overview again, why have I chosen this particular time कि मार्च 2020 में क्यों ये स्टॉक ट्रिगर्स आ गए थे जिससे हम बाय कर सकते थे. well, I will explain later obviously, but आप देखो कि जिस टाइम पे ट्रिगर्स आने लग गए थे उस टाइम से within 3 years it has given 10 time shareholder returns. So unfortunately again I am not invested in this business. But why am I talking about this business? Because this is one of the best case studies that I have understood in terms of research aspect. कि क्यों आपको कोई भी आइडिया इमीडिएटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्यों आपको ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना चाहिए कोई भी आइडिया को इन केस देयर आर abnormalities. So about the company, so I won't go deeper into the business. So basically company is a Themis Medicare group business. So Themis Medicare is another listed company which handles its core operations. तो इसके दो प्रमोटर है. एक प्रमोटर जो है उसका 50% स्टेक है बट वो होल्डिंग कंपनी की तरह होल्ड करते हैं, एंड दूसरे जो थेमिस मेडिकेयर है उनका 25% स्टेक है टुवर्ड्स द बिजनेस. तो दे हैंडल द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ दिस बिजनेस एंड दे हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस बिजनेस सिंस लास्ट 2-3 decades. एंड आप देखोगे तो ड्यूरिंग 2010-15 पीरियड दिस बिजनेस वाज सफरिंग बैडली. इनका नेगेटिव नेटवर्क था, कुछ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं था, एनुअल रिपोर्ट में तो इन्फॉर्मेशन नहीं था, एंड एवरीथिंग वाज अनसर्टेन. तो मैं नॉर्मली क्या करता कि जिस बिजनेस का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है उसको मैं कंप्लीटली इग्नोर ही कर देता था. सो अगेन दिस इज व्हाई दिस बिजनेस इज अ गुड केस स्टडी एज वेल. सो कमिंग टू द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये लोगों के प्राइमरली खाली दो प्रोडक्ट्स है, रिफार्मेसिन एस
एंड रिफॉर्मेशन O. सो जो रिफॉर्मेशन S बिजनेस है, ये प्राइमरली ये लोग टेंडर में अप्लाई करते हैं, एंड ये जो इनके बायोटिक्स होते हैं फॉर ट्रीटिंग ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑल सच थिंग, उसमें ये अप्लाई होता है, एंड इनका जो बेसिकली डिमांड आता है वो टेंडर्स के थ्रू आता है, रिफॉर्मेशन S का. एंड वन देन अदर प्रोडक्ट इज रिफॉर्मेशन O, जो इन्होंने 2018-19 के टाइम पे इंट्रोड्यूस करा था. सो ये प्रोडक्ट भी आगे ये अब ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो इंटरमीडियरीज है, दैट इज ये आगे यूज होते हैं टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट्स बाय कंपनीज लाइक लुपिन एंड अदर सच बिग नेम्स. तो ये इंटरमीडिएट जो है, इनके खाली दो ही प्रोडक्ट्स है, एक रिफॉर्मेशन एस है जो टेंडर बेस्ड है, एक रिफॉर्मेशन ओ है जो आगे रिफॉर्म मिक्सिंग करके एपीआई होता है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प होता है. एंड ये रिफॉर्म मिक्सिंग जो है ये बेसिकली डायरिया और वो सब को ट्रीट करने में यूज होता है. एज वन कैन सी खाली दो प्रोडक्ट ही है, तो इसमें टिल नाउ आई डोंट सी एनीथिंग चेंजिंग एट ऑल. बहुत स्मॉल कंपनी लग रहा है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है, एंड नथिंग सीम्स टू अलाइन टिल नाउ. But then comes FY20. If you will see, इनका sales growth has close to doubled. इनके margins have increased by more than 20 basis, 200 या 2000 basis points. But what changed drastically? So truth be told, ये stock तब कुछ 100 या 200 rupees पर trade करा था versus current valuations of around current price of around 800 to 900 rupees. तो मैंने तब ये stock reject कर दिया था because I thought कि ये COVID led demand है. कोविड में कुछ इनका कुछ प्रोडक्ट लग रहा होगा बिकॉज फार्मा कंपनी है, तो उसके से इनके मार्जिन बहुत बढ़ गए होंगे और इसलिए सेल्स बहुत बढ़ गई होगी. तो आई कम्प्लीटली रिजेक्टेड दिस आइडिया बिफोर इवन स्टडिंग की बिजनेस करता क्या एग्जैक्टली. तो अगेन दिस इज अ मेजर मिस फॉर मी, बट दिस इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस आइडिया कि जब भी कोई अबनॉर्मलिटी आए, जैसे प्रभाकर कुडवा ने रिसेंटली स्मार्ट सिंह के साथ एक सेशन लिया था रिगार्डिंग अर्निंग सरप्राइजेस. सो आई विल अगेन हाईली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच दैट सेशन एज वेल. तो उसमें डिस्कस करा था हमने कि जैसे कोई एकदम से सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ या मार्जिन ग्रोथ आए, तो यू शुड इमीडिएटली टेक अ लुक एट दैट बिजनेस, किसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एंड यू शुड स्टडी मोर अबाउट द बिजनेसेस. तो इन दिस केस इसका सेल्स ग्रोथ आ गया, इसके मार्जिन ग्रोथ भी आ रहे हैं, बट दिस वाज नॉट जस्ट अ सिक्लिकल या फिर वन टाइम मूव. अगर मैंने बिजनेस स्टडी करा होता ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट इज ड्यूरिंग मार्च पीरियड ऑफ 2020, आई वुड हैव सीन कि दे हैव कंप्लीटली चेंज्ड देयर बिजनेस मॉडल. So earlier they had only two customers, Lupin and one other name which I am forgetting. But ये दो customers primarily contributed close to 90% of their overall revenues. And ये करते क्या थे? Basically ये job work contract लेते थे. And उसमें ये products बनाते थे for these companies, ये जो इनके intermediaries थे. And उसमें ये लोग एक fixed margin start करते थे. So what they ensured is इनके जो पहले जो margin थे, they stayed intact. इनका growth थोड़ा कम था because इनके ultimate realization were fixed. तो जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा उससे खाली इनका ग्रोथ आएगा बिकॉज कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट थी कि आपको हमको ईयरली इतना कॉन्ट्रैक्ट में देना है, इस पर्टिकुलर प्राइस में देना है, जितना रॉ मटेरियल उसके सपोज 10-20% आप मार्जिन लगा लो, उसके ऊपर आपको हमको सेल करना है प्रोडक्ट. सो बिकॉज ऑफ दैट इनकी जो सेल्स ग्रोथ थी वो प्राइमरली ड्रिवन बाय वॉल्यूम ग्रोथ. एंड सिंस ये खाली कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसे हुए थे क्योंकि 90% इनका कॉन्ट्रैक्ट से बिजनेस आ रहा था, तो इनकी ग्रोथ भी नहीं आ रही थी सेल्स में और इनके मार्जिन भी लोअर रेंज में थे. बट आफ्टर मतलब FY19 दे रियलाइज की जब मार्केट में जो सेम प्रोडक्ट्स है उनका रियलाइजेशन बहुत हाई है. सपोज दे आर मेकिंग अगर 15-20% रेवेन्यू मार्जिन, तो मार्केट में सेम प्रोड्यूसर्स मेक अराउंड 30-40% मार्जिन. तो हम क्यों 30 मतलब 15% मार्जिन बना रहे हैं. तो दे रीनेगोशिएटेड द कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें दे शिफ्टेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट, सिंपली पुट जॉब वर्क टू मार्केट सेल्स मॉडल, वेर इन मार्केट में जो रेट चल रहा होगा ये अपने क्लाइंट्स को उस रेट पे देंगे. अब इससे दो चीज हुई, एक तो मार्केट में क्योंकि रेट ज्यादा थे तो इससे इनके अल्टीमेट रियलाइजेशन बढ़ गई और इनके मार्जिन बढ़ गए. बट एट द सेम टाइम्स ये लोगों को दिख गया कि अभी ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो इनका एक ये इशू पे था कि अब गारंटी नहीं था कि इनका जो कस्टमर होगा वो इनसे प्रोडक्ट लेगा. तो ये लोगों को एक R&D और क्या बोलते हैं सेल्स एफर्ट्स भी लेने पड़ रहे थे कि अभी हमको अपने जो प्रोडक्ट है वो आगे पुश करने पड़ेगी काफी ज्योग्राफीज और टेंडर्स और ये सब में. तो ये चीजें कि इनने सेल्स और मार्केटिंग में अपना फोकस बढ़ा दिया. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बिकॉज ये लोग ने जो मॉडल में शिफ्ट करा था टूवर्ड्स मार्केट सेल्स मॉडल, तो इनका जो पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था उसमें पहले ऑर्डर आते थे, फिर ये लोग बनाते थे प्रोडक्ट फिर देते थे. तो इस की जो वर्किंग कैपिटल साइकिल थी दैट वाज वेरी लो, क्योंकि जब ऑर्डर आएगा जैसा कॉन्ट्रैक्ट आएगा उस हिसाब से दे नीड टू प्रोड्यूस. बट आफ्टर शिफ्ट इन दिस बिजनेस दे नीडेड टू मेंटेन हाई इन्वेंट्री डेज.
जिसकी वजह से भी इनकी ओवरऑल जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है दैट इंक्रीज मैसिवली। तो टू थिंग्स हैपेंड, एक तो इनके मार्जिन बढ़ गए, बट एट द सेम टाइम इनके वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी also increased a lot. So I've almost mentioned all the points. So why am I discussing this point कि working capital intensity बढ़ रही? तो one will see कि इनके जो overall cash conversion cycle थी, अब 1-2 साल इग्नोर कर दो बिकॉज कोविड था, बट ओवरऑल इनके जो रिसीवेबल डेज थे, इन्वेंट्री डेज थे, वो काफी बढ़ गए इन दिस न्यू मॉडल। एंड इसका रिस्क ये था कि जैसे इनका वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी बढ़ती एंड मार्केट प्राइस पे इनका ओवरऑल रियलाइजेशन पे डिपेंडेंट, जबकि पहले दे वर स्टेबल 15-20% आराम से आएगा, बट बिकॉज ऑफ द शिफ्ट दे टुक अ रिस्क कि हमारा रियलाइजेशन बढ़ जाएगा तो हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। बट एक रिस्क ये भी था कि इनकी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी भी बढ़ गई थी, तो इनको कैश चाहिए था ताकि अपना बिजनेस कंटिन्यूसली मेंटेन कर पाए। तो अब नॉर्मली मैं उस टाइम पे बिजनेस देखता, तो अब हमको नॉर्मली समझाया था कि अगर कोई बिजनेस एकदम से नॉर्मल मार्जिन आ रहा है, नॉर्मल रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, एट द सेम टाइम इसके कैश कन्वर्जन साइकिल जो वर्किंग कैपिटल डेज है, डेटर डेज है, बहुत बढ़ रहे हैं, तो दिस इज अ रेड फ्लैग कि क्यों उसके डेटर डेज बढ़ रहे हैं, और ये सब तो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं या फॉरेंसिक्स का सोच के हम छोड़ देते हैं। एंड सिमिलर अगर आप देखोगे तो इसका 5 मतलब 2015 के पहले इसका नेगेटिव नेटवर्क था, एंड उसके बाद जैसे इसके प्रॉफिट आने लग गए तो इसका रिजर्व्स इंप्रूव हो, और अब ये पॉजिटिव नेटवर्क कंपनी है। पर हमारे ये भी फिल्टर होता है जनरली कि जिसका पास्ट में नेगेटिव नेटवर्क रहा है तो उसमें पास्ट में तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, तो उसको अवॉइड कर दो। तो मैं खाली 3-4 का फ्रेमवर्क लगाता तो मैं जनरली अवॉइड ही कर देता बिजनेस को कि नेगेटिव रिजर्व्स है, मार्जिन अब नॉर्मल है, डेटर डेज बढ़ गए। बट दिस इज व्हाई दिस बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। अगेन आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस, आई डोंट नो इफ आई विल इन्वेस्ट अगेन और नॉट, आई डोंट नो कि ये मार्जिन काफी सस्टेनेबल है या नहीं। बट अगेन द आइडिया इज एबनॉर्मलिटी को आप जितना एम्ब्रेस करोगे, जितना आप स्टडी करने की ट्राई करोगे वर्सेस रिजेक्टिंग दैट कि ये वन टाइम है, तो वो आपको बहुत हार्म देगा। इसलिए कभी भी कोई बहुत एकदम से की चेंज आए, वॉलेटिलिटी आए, तो उसको एम्ब्रेस करो, उसको स्टडी करो ऑब्जेक्टिवली वर्सेस इग्नोरिंग देम। Dhruv, I think Dr. Suvid has a question, so I'm unmuting him. Yeah, Dr. Suvid, you can go ahead and ask your question. Yeah, can you hear me, Dhruv ji? Yes, I can hear you. Brilliant presentation, thank you very much. Listen, एक ये थेमिस के बारे में आप बात कर रहे थे, तो यू आर टॉकिंग ऑफ टू प्रोडक्ट्स, रिफैक्सिमिन एंड रिफैम्पिसिन, ये दोनों अलग प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। रिफैम्पिसिन इज एंटी टीबी ड्रग, रिफैक्सिमिन इज अ एंटी डायरियल ड्रग। पर अब ये दोनों का व्हेन द कंपनी 2020 में जो चेंज हो गया, the product list did not change, only the way they marketed the product changed, right? Now Yeah. my thought in this was, now there's a mental model called fish in the pond size, or the size of the fish. So abhi rifaximin, yeah, as a product is a very small fish in a very small pond, uska use बहुत कम है। and rifampicin जो टीबी के लिए यूज किया जाता है, तो लॉरस लैब का जो हुआ HIV का, तो HIV में बहुत सारी लॉट ऑफ कंपनीज केम, टेंडर प्रोसेस आ गया, मार्जिन कट हो जाता है। सिमिलरली ट्यूबरकुलोसिस में वही होता है, लॉट ऑफ कंपनीज स्टार्ट कमिंग इनटू इट, इट्स नॉट अ नीश प्रोडक्ट कि सिर्फ थेमिस ही बना पाएगा। तो a lot of companies come and then the margins will shrink because the tender process is such that जिनको चाहिए है उनको huge quantum में चाहिए and their margins will be lesser. So जब आप market rate पे आ जाते हैं and you remove that certainty to your earnings, so that is a bigger risk actually than normal. तो जब ये revert हो जाएगा mean को 2020 के बाद में, तो they probably will not get even those rates that they got at that time. So that is the risk they took, one. एंड सेकेंडली ऐसे वक्त पे द मॉलिक्यूल साइज एंड द मतलब द नीश प्रोडक्ट साइज, ये आप देखते हो क्या? Right. So to answer the first question, that is the sole reason why I didn't invest in this business. Because मेरे को एक तो ये दिखा था कि दो प्रोडक्ट ही है, आई एम अनएबल टू जज कि मार्केट साइज कितना बड़ा है। एंड टॉकिंग अबाउट रिफार्मेसिन, वो जो है दैट इज नॉट अ टेंडर बेस्ड बिजनेस। रिफार्मेसिन एस इज अ टेंडर बेस्ड बिजनेस फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड। तो रिफार्मेसिन ओ इज नॉट अ टेंडर बेस्ड बिजनेस, एंड वो तो एक्चुअली अच्छा कर भी रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि रिफार्मेसिन एज यू टोल्ड टेंडर का ये इशू है, बट अनदर मेजर इशू दैट दे आर फेसिंग करंटली, तो रियलाइजेशन एज यू सेड की गिर सकते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली कि टेंडर में क्योंकि आप डिपेंडेंट हो, तो अगर टेंडर आने बंद हो गए तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगा। तो आप जैसे देखोगे इनका करंट ईयर FY23 इनका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं था, ऑल्दो मार्जिन स्टिल इंप्रूव है, इनका प्रॉफिटेबिलिटी आया है, बट इनका लास्ट 2 क्वार्टर स्पेशली रेवेन्यू ग्रोथ वाज नॉट देयर बिकॉज रिफाइस का टेंडर्स ही नहीं आ रहे थे।
So I completely agreed with the point कि एक तो साइज ही बहुत छोटा, ड्रग्स का इतना बड़ा साइज है नहीं, मेरे को उसका श्योरिटी नहीं है कि न्यू प्लेयर आया नहीं है. हाँ. That is one point. But one good development that they are doing. एक तो मेरे को इतना समझ में आया टू बी ऑनेस्ट कि इनके दो प्रोडक्ट जो है ना, इसमें करंटली डोमेस्टिक में दे मेंशन इन सम ऑफ देयर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई थिंक कि इनका मोर देन 50% मार्केट शेयर है. एंड ये प्रोडक्ट में इतना समझ में आ रहा है कि एक तो चलो आप पॉजिटिव में भी ले सकते हैं कि चलो 50% मार्केट शेयर है तो मतलब लीडर है, बट एट द सेम टाइम इतनी छोटी कंपनी अगर 50% मार्केट शेयर ले पा रही है तो दैट शोज कि बहुत नीश प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है. कि अगर बड़ा आगे मे बी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रहे ना रहे तो द मैनेजमेंट इज क्विक टू एड्रेस दैट. तो आप देखोगे तो दे आर डूइंग द केपेक्स ऑफ अराउंड 200 crore फॉर दैट एपीआई ब्लॉक. तो दे रियलाइज कि अभी हम जो इंटरमीडिएट बढ़ा रहे हैं खाली 2 बना रहे हैं वो, तो इसमें बहुत रिस्क है हमारे टोटल बिजनेस में. तो आप जैसे इनका देखोगे पहले तो इनकी जो ओवरऑल नेटवर्थ थी, जो रिजर्व थे, दैट वाज नेगेटिव. तो तब इन लोग के लग्जरी नहीं थी ये सब डिसीजन ले पाए. बट बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट इनके टेम्परेरी, आप अगर टेम्परेरी भी देख लो जो प्रॉफिट्स आए तो उस चक्कर में दे आर नाउ रीडिप्लॉइंग दैट अर्निंग्स इनटू दैट एपीआई ब्लॉक. So because of that, in the coming 2 years, this business can change drastically. And इनका जो overall जो business contribution आ रहा है अभी, ये जो 2 drugs से, that will reduce substantially. But because of the cash that they have generated and they are redeploying into API block, उसकी वजह से इसका जो overall business profile है basically, that can improve. Again, बहुत uncertainty है इस चीज में. तभी I am not invested. बहुत uncertainty है. परफेक्ट. ये जो आपने बात किया ना, ये एग्जैक्ट सेम सेंटेंसेस लॉरेंस लैब के टाइम अपन ने देखे थे कि ये एचआईवी का पूरा पोर्टफोलियो गोइंग टू शिफ्ट टू एंटी डायबिटिक मेडिसिन्स, दिस एंटी कैंसर मेडिसिन्स, एंड देन वो जो बीच में का पीरियड होता है ना, दैट स्टार्ट्स शोइंग अ लॉट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस बिकॉज जो बिजनेस पहले दे रहा था वो उतना नहीं देता है और जो आने वाला है उसका आना नहीं शुरू हो जाता है. सो दैट आल्सो हैज टू बी सीन. राइट. And another point कि इनका जो मेजर जो कंपटीशन है that is not with other bigger players like Lawrence और ये सब. ये लोग जनरली इंटरमीडिएट सिंपल की बड़ी चीज है ही तो इन्हें बनाने की ट्राई भी नहीं करते. जैसे they have a relationship with Lupin for close to 20 years and Lupin being such a big player, तो करना होता तो 20 साल में कर लेता. वो इनका वेट ही नहीं करता ऐसे करने का. तो मेरे को जितना समझ आया कि इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दैट इज नॉट ओनली वेरी नीश बट ये जो फर्मेंटेशन इनका जो प्रोसेस है बनाने का दैट प्रोडक्ट दैट इज इट्स बहुत डिफिकल्ट. क्योंकि they mentioned in one of the annual reports, like I think so FY 15 या 16 का annual report था, where they mentioned कि इनके पहले मार्केट में कुछ 13-15 प्लेयर्स थे ऑलरेडी इस चीज में, ये फर्मेंटेशन कैपेसिटी का. बट ड्यूरिंग दैट टाइम चाइना से इतना ज्यादा कंपटीशन आता था कि चाइनीज से कम्पीट ही नहीं कर पाते ये लोग. तो आधे प्लेयर्स तो ऐसे बंद हो गए क्योंकि फर्मेंटेशन कैपेसिटी चलाना इज वन थिंग एंड उसको फिजिबली और इकोनॉमिकली चलाना इज अनदर थिंग. राइट. और इसके जो जेस्टेशन कॉस्ट होते हैं, आप जैसे देखो इसके लास्ट 5-6 साल में इसका नेगेटिव नेटवर्थ ही था, ऑल्दो इट वाज मेकिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिकॉज के प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस पे ज्यादा थे. तो एक तो इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत हाई है एंड बहुत छोटा मॉलिक्यूलर है. और दो जैसे इन्होंने बताया था इनका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है एक्जिस्टिंग फैसिलिटी का, बैलेंस शीट में खाली 30 करोड़ दिखता है बट एक्चुअली में 200 करोड़ जितना इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है. तो एक तो कोई क्यों इतने छोटे मॉलिक्यूल के इतना इन्वेस्टमेंट करेगा, देन जेस्टेशन पीरियड खेलेगा जब छोटा नीश है सर. तो इनका प्राइमरी जो कंपटीशन है दैट इज फ्रॉम इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कैपेसिटी. अब हुआ क्या, इनके मार्जिन्स और इंटेंसिटी क्यों इंप्रूव हो गई कि एक तो इंडियन प्लेयर्स से आगे चले गए आफ्टर फेसिंग दैट कंपटीशन फ्रॉम चाइना, और चाइना ने खुद ने इंपोर्ट करना कम कर दिया बिकॉज उसके पावर कॉस्ट इतने हाई हो गए थे कि उनके लिए इतना फीजिबल नहीं हो रहा था ये फर्मेंटेशन करके ये प्रोसेस करके वो सप्लाई करना. तो उसकी वजह से इनका कंसोलिडेशन हुआ इंडस्ट्री में, उसका इनको डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन गया बेसिकली. So ideally my point is that कि again बहुत uncertainty even in that period. But again अगर आपको दिख रहा था कि बिजनेस आप तब का मार्केट कैप देखते तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आता खाली चीज से दैट वुड हैव बीन अराउंड, मतलब मैं ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ उस टाइम में खाली 3 to 4 टाइम्स शायद से ये प्राइस टू सीएफओ या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ट्रेड करा था. तो इनके सामने उसको वन टाइम नहीं समझ के थोड़ा समझा था कि 2-3 साल भी लास्ट करता तो यू वुड हैव अंडरस्टूड कि कितना हाईली अंडर वैल्यूड था स्टॉक. क्योंकि इनका एकदम से तो चेंज आया बिजनेस में, उससे इनके बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स आ गए. तो इवन इफ 2-3 साल ही रहते हैं इनका वैल्यूएशन इतना कम था बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई इग्नोर्ड कि नहीं वन टाइम इवेंट है कि आगे सस्टेन नहीं करेगा. तो दैट वाज द पॉइंट. एंड अगेन जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जो है अगर रेगुलरली ट्रैक करो, जैसे अभी इनको कंपटीशन आ नहीं रहा इंपोर्ट्स का, तो अभी भी ये लोग अपने कोर बिजनेस में मार्जिन से मेंटेन कर ही पा रहे हैं.
तो हम वो क्वार्टरली ट्रैक कर सकते हैं कि आगे वो आ रहे हैं वो सिचुएशन या नहीं. एंड आई थिंक रिटर्न वन ब्लॉग एज वेल, इफ यू कैन रीड, तो उसमें मैंने रिफा एस का भी मेंशन करा है. जो इनका लास्ट ईयर रिफा एस वाज नॉट डूइंग दैट वेल. अभी करंट ईयर में इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे है, बिकॉज कुछ हु ने कुछ नई पॉलिसी लाया है जिसकी वजह से इनका जो ड्रग है, जिसका टेंडर से लास्ट ईयर में डिमांड बहुत कम था, उसका इस साल डिमांड बढ़ जाएगा. एंड एट द सेम टाइम हमने लास्ट ईयर इन्वेंटरी बिल्डअप करा बहुत ज्यादा कि डिमांड नहीं आता, बस स्टिल फुल मतलब 100% कैपेसिटी पे वो लोग चला देते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड. एंड इफ डिमांड कम्स, तो इस साल हाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स आने हैं. Okay, this is just a guesstimate. I'm not invested currently, but Perfect. just a thought. No, just understand. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Suvid. Yeah. Yeah, Dhruv, I think you can I continue. think we can, yeah, that is the last that is left. So I think we continue. So yeah, coming to the framework 7. Now, this is just a disclaimer. I am invested in this company, and this is not a recommendation, especially at this levels. So the idea is not ki invest karo nahi karo, but again, the pick and shovel theme, that is one of the best theme that I've come across because it is applicable across the industries. So why is that? So after COVID period, I was very bullish on this real estate theme, and everyone was talking कि अभी इतना downturn आ चुका है 10 साल का कि real estate is bound to grow. But again, I generally avoid cyclical companies. So during that time, I started reading कि एक pick and shovel theme होता है, ancillary theme होता है जो पीटर लिंच पे बहुत ज्यादा spread कर रहा है अपनी ideology के थ्रू. So अगर किसी को real estate theme play करना था during that time, and he was very confident about its growth prospect, तो कैसे play करते हैं? तो बहुत सारे तरीके थे. वायर्स हो गई, केबल्स हो गई, पेंट्स हो गए, प्लास्टिक पाइप हो गए, वुड पैनल हो गए, टाइल्स हो गए, बहुत सारे तरीके थे. यू विल सी कि एज लास्ट 2-3 साल ये रियल एस्टेट इज डन वेल, तो ये जो वायर प्रोड्यूसर है जैसे, फिर ये जो अपना एस्टेल और ये जो भी कंपनीज है, सीमेंट, टाइल्स, ये सब ने भी लास्ट 3 साल में काफी अच्छा करा है. सो अगेन, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन दैट सिक्लिकल कंपनीज, इफ वन वुड स्टिक टू एंसिलरीज, तो काफी बेनिफिट रहता है. सो अगेन नाउ गोइंग टू फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम्स अप कि कंपनी कैसे स्टडी कर सकते हैं, उस पर बेसिकली सारी आइडिया दूंगा कंपनी का काम क्या है. तो स्टाइलम लैमिनेट्स का बेसिकली स्लोगन ये कि यूरोपियन क्वालिटी एट इंडियन प्राइस. So when we study the business, इनका 65 to 70% revenue come from exports, and that too primarily from Europe. So again, this in itself is another good mental model कि कोई छोटी सी कंपनी अगर अपना मेजॉरिटी रेवेन्यू यूरोप जैसे, यूएस जैसे हाईली रेगुलेटेड मार्केट में अगर सप्लाई कर पा रहा है एंड मार्जिन मेंटेन कर पा रहा है, दैट शोज कि इनका कुछ प्रोडक्ट में क्वालिटी इतना अच्छा होगा जिसकी वजह से वो इतनी टफ डेमोग्राफिक्स में भी सप्लाई कर पा रहे हैं. या आई थिंक आयुष मित्तल जी ने अपने एक स्पेसिस सेशन में या फिर कहीं मेंशन करा था, तो मैंने उनसे ये चीज पिक करी थी कि ऑलवेज स्टडी दोस बिजनेसेस जो स्पेशली स्मॉल कंपनीज जो एक्सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज डूइंग एक्सपोर्ट इज मच टफर टास्क. So this was established in 1991. So इनका लास्ट 3 डेकेड्स का ट्रैक रिकॉर्ड है. एंड इफ यू विल स्टडी द कंपटीटर्स, तो उनका कुछ 5-6 डेकेड्स का ट्रैक रिकॉर्ड है. तो इसके बाद अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन देखोगे, तो दैट इज मच स्मॉलर वर्सेस द कंपटीटर्स. So their key products include laminates and then new product that is acrylic surfaces. So again, why did I say कि ancillary to ancillary मतलब pick and shovel theme या फिर ancillary को study करो. So if you just see their last 5-10 years of track record, name one in real estate specific real estate company जिनने लास्ट इतना consistently sales growth करा है during downturn period and margins इतने maintain करे अपने. There aren't any, to be honest. Pure play cement, pure play real estate जो companies है, construction companies है, वो ऐसा maintain कर नहीं सकते because उनका inherent cyclicality is much higher. And इनके जो ancillary companies होते हैं, they not only cater to real estate companies, but also other similar मतलब industries like airports हो गए, उधर इनका use कैसे हो जाता है, offices हो गए, मतलब lifts हो गई. तो ये सब ancillary का फायदा ये है कि आप एक तो जो की इंडस्ट्री जैसा बुलिश हो उसका तो बेनिफिट ले सकते हो, बट साथ में जो और सिमिलर मतलब है इंडस्ट्रीज, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो. एट द सेम टाइम आपकी रेवेन्यू ग्रोथ भी ज्यादा स्टेबल रहेगी एंड मार्जिन भी ज्यादा स्टेबल रहेगी. So as you can see कि इनके लास्ट 5-10 years में इनके मार्जिन काफी अच्छे रहे, प्राइमरली ड्यू टू द टेलविंड्स, द प्रॉपर ब्रांड प्रोफाइल, इनका प्रीमियम जो पोर्टफोलियो मिक्स है उसके से भी मार्जिन काफी अच्छा मेंटेन कर पाते हैं वर्सेस देयर पीयर्स. So because and economies of scale, again, they have the largest plant in Asia for producing laminates. So because of that as well, they are able to produce goods at very cheaper rates.
तो ये सब रीजंस की वजह से इनके मार्जिन एंड सेल्स हैव बीन वेरी गुड. बट द की आइडिया बिहाइंड दिस इज, if you're really into real estate theme, but if you're unsure कि आप वो cyclicality judge कर सकते हो नहीं कर सकते हो, so this can be a very good way to play that theme. And another fundamental framework that I want to talk about, which is very interesting to me. Normally, I solely focus on earnings and sales growth. But sometimes even a fundamental investor can learn something from technical investors. So what is that? So one will study the history of the business. So one PE fund, that is Lighthouse Emerging India Investors, invested close to 10% stake during FY19 period. And they infused funds in the business so that they can do more capex. So during that time, इनमें invest करता था, वो tough period में invest करता था. That was a good investment for the company. But what they did is, जैसे जून 21 आने लग गया, as you can see, इनका भी 10% था. आफ्टर जून 21 इनका 10% शेयर होल्डिंग था. जैसे ही शेयर प्राइस हल्का सा मूव करता था, दे यूज्ड टू इमीडिएटली सेल देयर होल्डिंग्स. तो जून में जैसा देखो कि इनने 1300 टच करा, तो इनका स्टेक आधा 5% हो गया 10% से. फिर से सेल लेवल पे आए, इनने फिर से गिरा दिया. मतलब यू कैन सी फ्रॉम द वॉल्यूम्स. एंड आफ्टर लास्ट सितंबर में इनने फिर से सेल करा 2022 में. एंड इनका फिर देखो सितंबर में इनने जब लास्ट सेल करा, उसके बाद इनकी ओवरऑल जो होल्डिंग्स थी वो कम हो गई. मतलब इनका जो होल्डिंग का टोटल वो निकल ही गया. एंड अगर आप इनका डीआईआई पोर्टफोलियो पढ़ोगे, तो इन्हें जो सेल करा वो काफी अच्छे न्यू इन्वेस्टर्स ने बाय करा. मैं नेम नहीं लूंगा ताकि वो बायस आ जाएगा. बट आइडिया इज दैट कि आप इनका अगर ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आप इनका अर्निंग्स परफॉर्मेंस देखोगे, तो आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली कि जून क्वार्टर में ऑफ FY22 इनका ईपीएस वाज ओनली 24 रुपीज, while जून क्वार्टर फॉर FY22, sorry, from FY21 to FY22. So ये सेम क्वार्टर में इनका अर्निंग्स ईपीएस दैट इज ग्रू फ्रॉम 24 रुपीज टू 40 रुपीज. एंड ऐसा भी था कि इनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव थी, बट ड्यूरिंग द सेम टाइम शेयर प्राइस मूव नोवेयर. एंड वंस इनका होल्डिंग सब बिक गया, so इमीडिएटली 50% मूव आया इनका. एंड फंडामेंटल्स वेर इंटैक्ट. फंडामेंटल्स में कुछ बहुत मेजर चेंज नहीं आया था. ऑल द यस थोड़े टेलविंड्स भी आए थे बिजनेस में, एंड थोड़े अदर ट्रिगर्स भी थे जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस एकदम से बहुत बड़ा. जैसे इन्होंने अभी रिसेंटली केपेक्स अनाउंस करा इन देयर कोर बिजनेस, एंड दे वर डूइंग वन केपेक्स इनटू प्लाईवुड, जो इन्होंने अबॉर्ट कर दिया. कि प्लाईवुड इज अ बेसिकली उनका भी आगे सीन है कि मे बी इतने ग्रोथ आए ना आए, इंडस्ट्री प्रॉस्पेक्ट्स आर नॉट दैट गुड, तो उन्होंने वो अबॉर्ट कर दिया बिजनेस. तो बिकॉज ऑफ दोस ट्रिगर्स एज वेल शेयर प्राइस मूव. बट इफ वन अंडरस्टूड कि ये प्रमोटर जो है, मतलब जो बड़ा प्लेयर है, वो कब से सेल करने की ट्राई कर रहे हैं, तो वन कुड हैव ईदर held on to that business thinking कि नहीं बिजनेस का परफॉर्मेंस जो भी आ रहा है, दिस इज प्राइमरली ड्यू टू ओल्ड इन्वेस्टर्स हाई सेलिंग या सप्लाई ज्यादा है बेसिकली, इसलिए आप और ज्यादा बाय करने की ट्राई करते हो उस टाइम पे, जो कि मैंने नहीं करा सैडली. या फिर आफ्टर द सेलिंग प्रेशर गॉट ओवर एंड यू सॉ की फंडामेंटल्स आर गेटिंग इंटैक्ट, तो आप बाय करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम. तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये टेक्निकल यूज करके बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो. आपको मेरे हिसाब से you can use technicals along with fundamentals to understand कि invest करना चाहिए नहीं करना चाहिए. Like I am not a technical analyst, I don't use technical also, but I use technical analysis to understand the basic psychology behind the price movement. कि क्यों ये लास्ट एक साल में despite growing their revenues, profits, share price went nowhere. क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि share price growth हो रहा है बट प्राइस नहीं मूव होता, एंड देन सडनली एक बैड क्वार्टर आता है जिससे इनका शेयर प्राइस गिरता है, जिससे मालूम पड़ता है कि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड दिस हाई ग्रोथ जो आगे गिरने वाला था. तो अगेन टू गेट अ बेटर सेंस ऑफ क्यों प्राइसेस मूव कर रहे हैं, तो आप ये सब जो शेयर मतलब शेयर होल्डर पैटर्न्स होते हैं, जो वॉल्यूम्स होती है, वो सब आप ट्रैक कर सकते हो, जिससे आपको बेसिकली साइकोलॉजी मालूम पड़े बिहाइंड द शेयर प्राइस मूवमेंट, एंड आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ. So this is another major learning which I got by studying this business. So I am done with this presentation. So we have covered in this presentation close to 11 frameworks. Change in management through Tantak Industries, higher reinvestment in the business through Goldium and Salem Industries, as I just talked about. ठीक है, अभी न्यू केपेक्स अनाउंस करा है, बट एट द सेम टाइम मैंने गल्फ ऑयल को रेड में मार्क करा है. क्यों? क्योंकि इनका रीइन्वेस्टमेंट इन द कोर बिजनेस हैज रिड्यूस सब्सटेंशियली, तो इसका हमने नेगेटिव केस भी देख लिया. सिमिलरली रॉबस्टनेस रेशियो, दैट इज कितना बेनिफिट दे रहे हो अपने कस्टमर्स को, तो हमने वो भी देखा है थ्रू रागा प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स. वैल्यू माइग्रेशन हमने रागा प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स के थ्रू भी देखा है, गोल्डन के थ्रू भी देखा है, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट फ्रॉम नॉर्मल डायमंड्स टू लैब ग्रोन डायमंड्स.
एंड स्टाइलम के केस में देखा है। अगेन मेरे को 3-4 साइड में कवर करना था, बट स्टाइलम में भी सेम केस हमने विटनेस करा है कि जो अनऑर्गेनाइज शेयर था दैट वाज क्लोज टू 60%, जो भी 50-45% तक आ चुका है डोमेस्टिक में। तो उसकी वजह से भी काफी टेलमेंट्स हो सकते हैं आगे बिजनेस में आके कि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज आ सकता है। देन इंटेलिजेंट क्लोनिंग में देखा है हमने इन टर्म्स ऑफ रागा प्रोडक्टिव एनहांसर्स। देन अगेन आई एम नॉट नेमिंग द गाय जो साइलम में है, जैसे मुकुल अग्रवाल जी इसमें इन्वेस्टेड है एंड काफी अच्छे इन्वेस्टर और है। आई एम नॉट नेमिंग द गेम, बट अगेन दिस इज अ गुड वे ऑफ आइडेंटिफाइंग न्यू स्टॉक्स। तो मैंने इंटेलिजेंट क्लोनिंग भी डाला था। एंड अगेन इफ यू आर सीइंग कि काफी जो फ्रेमवर्क्स है वो क्रॉस एप्लीकेशन भी है उसमें, जैसे बाप इन्वेस्टिंग सब में अप्लाई करता है, इंटेलिजेंट क्लोनिंग सब में अप्लाई करता है, डीमर्जर सब में अप्लाई करता है, पिक एंड शवल थी जैसे एंसिलरी जो है हमने स्टाइलम में देखा। बट वन वुड हैव थॉट कि रागर प्रोडक्टिविटी एनहांसर जो है वो भी एंडिंग में स्टील इंडस्ट्री में जो ग्रोथ आएगा उस पर डिपेंडेंट है, बट स्टील इंडस्ट्री भी काफी सिक्लिकल है। तो थ्रू सप्लाई सिलिका रैमिंग मास वर्सेस मेकिंग स्टील प्लांट्स वन इज एबल टू गेट बेटर मार्जिन एंड हायर ग्रोथ। तो अगेन उसने भी एंसिलरी का यूज करके अपना बिजनेस मॉडल मोर रोबस्ट कर दिया, तो उसका भी क्रॉस एप्लीकेशन है। तो ये सब चीजें जो है सबका क्रॉस एप्लीकेशन है एंड दिस वाज द होल पॉइंट बिहाइंड दिस प्रेजेंटेशन कि हमने ये स्टॉक्स जैसे मैं सामने से मैंने प्रेजेंट करा, मैंने सब चीज का डीप रिसर्च भी करा था, स्टिल आई कुडंट इन्वेस्ट इन मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स फॉर सम रीजन। बट इफ वन वी अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क्स, द मेंटल मॉडल्स बिहाइंड दिस, देन वी कैन अप्लाई द सेम इन डिफरेंट स्टॉक्स एंड उससे हमारा एंडिंग में रिटर्न्स आ सकते हैं। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस में स्टॉक में अंडरस्टैंडिंग ली है वो कभी बेच नहीं जाएगी, वो हमेशा कंपाउंड होती रहेगी हमारी लर्निंग। So that was the core idea behind this presentation. So yeah, demerger हमने कवर करा है, टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, क्यों समझना चाहिए वो कवर करा, अवॉइड बात इन्वेस्टिंग, वैल्यू माइग्रेशन. So we have covered 11 fundamental frameworks. So I will briefly touch on 2-3 fundamental frameworks that one can also focus on. So that is new blood on management. So जैसे रागा प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स का आप देखोगे तो लास्ट 3-4 साल पहले प्रमोटर के जो सन थे, जो लंदन बिजनेस स्कूल दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब ये यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसे छोड़ के ही ज्वाइन द बिजनेस एंड उसके बाद से रिवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा है। सिमिलरली स्टाइलम में जैसे प्रमोटर इज वेरी बुलिश ऑफ द डोमेस्टिक सेगमेंट, जैसे पास्ट में दे एक्सपेक्टेड कि 70% रेवेन्यू वाज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, बट नाउ दे एक्सपेक्ट कि डोमेस्टिक विल बिकम अ मेजर पार्ट एंड उन्होंने अपना जो सन है उसको डोमेस्टिक बिजनेस का हेड बना दिया। तो सडन aggression in the domestic industry या domestic growth prospects is visible also because उनका बेटा बिजनेस में आ गया, तो he will want कि अगर मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ तो मैं भी ग्रोथ लाऊं उस चीज में। तो अगेन जो प्रमोटर का सन डॉटर बिजनेस में आ रहा है, स्पेशली कोई काम छोड़ के आ रहा है, तो दैट शुड बी इंडिकेशन कि कुछ वो लोगों को ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा होगा तभी कुछ छोड़ के आ रहे हैं, या फिर वो आगे और एग्रेशन लाएंगे इन द बिजनेस। सिमिलरली रिड्यूसिंग डेटर डेज, अगर आप साइलेंट का पढ़ोगे तो साइलेंट के नॉट ओनली मार्जिन इंप्रूव हुए, बट उसके जो डेटर डेज है इन लास्ट फ्यू इयर्स दैट हैव रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, स्पेशली इन द डोमेस्टिक मार्केट। एंड एज आई जस्ट टोल्ड कि अभी हम डोमेस्टिक मार्केट में काफी ग्रोथ करने की ट्राई कर रहे हैं एंड अभी सिंस इनकी डेटर डेज कम हो रहे हैं, तो हायर सेल्स ग्रोथ प्लस लोअर डेटर डेज इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, बिकॉज इट शोज कि आपकी ब्रांड इक्विटी बढ़ रही है मार्केट में, कि इवन आपकी सेल्स बढ़ रही है बट बायर्स आर विलिंग टू पे यू अर्लियर कि नहीं हमको आपका प्रोडक्ट चाहिए, आपका ब्रांड का अच्छा डिमांड आ रहा है तो हमको सेल करो। तो उसकी वजह से हमको एक ब्रांड इक्विटी या उनकी जो क्वालिटी है जो प्रोडक्ट्स का उसका हम जजमेंट लगा सकते हैं इससे। सिमिलरली हायर इंक्रीमेंटल शेयर ऑफ न्यू ज्योग्राफीज, एज आई सेड कि स्टाइलम में नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें ग्रोथ ज्यादा आएगा, बट इफ यू आर स्टडी द बिजनेस इन लास्ट 5-6 ईयर्स तो इनका डोमेस्टिक वाज ओनली 30% ऑफ द बिजनेस एंड उसमें इनका फोकस भी नहीं था इतना। एंड अभी वो लोग का जितना फोकस बढ़ गया है एंड वो न्यू ज्योग्राफी से अगर ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ आएगा तो इनका ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ था, जो पहले खाली एक्सपोर्ट्स आता था अब डोमेस्टिक से भी आएगा, तो इनका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स विल इंप्रूव। सिमिलर विद रागा प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स, इनका 5 इयर्स पहले एक्सपोर्ट से जीरो कंट्रीब्यूशन था एंड इन एनुअल रिपोर्ट 2023 दे मेंशन कि दैट कंट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज्ड टू 28 to 30%, जिससे इनके सारे रेवेन्यू ग्रोथ जो है लास्ट 3-4 साल में वो आया है and they are expecting this to increase to 40-45% in coming time. So again इधर से भी इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ सकता है, बिकॉज कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जो पहले प्रेजेंट ही नहीं था अब उधर से न्यू रेवेन्यूज आने लग जा रहे हैं, तो आपका ओवरऑल जो पाई है वो एक्सपांड हो गया, जिसकी वजह से आपके अल्टीमेट रेवेन्यू ग्रोथ विल बी हाई। सो या क्लोजिंग थॉट्स, बहुत लंबा प्रेजेंटेशन था, सॉरी। सो दोज ऑफ यू स्टिक टिल हियर, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। So what I've observed by studying 70 companies is that you don't need every information that you can get, because majority times
80% इंफॉर्मेशन होता है, दैट इज इनफ, सॉरी 20% इंफॉर्मेशन होता है, दैट इज इनफ टू मेक 80% ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। एंड उसके बाद आप धीरे धीरे जो होल्ड करोगे बिजनेस के, स्टडी करोगे, अपना वो एज जो 20% है वो धीरे धीरे अपना डेवलप करते रहोगे। So instead of focusing on getting perfection right when you study a stock, just try to understand the key growth drivers and धीरे धीरे जैसा आप स्टडी करोगे बिजनेस, जितना आप होल्ड करोगे, इन जनरल नहीं होल्ड करके स्टडी करोगे, तो आप अपना वो डिफरेंशियल एज जो है, जो 20% है, वो डेवलप करोगे। सिमिलरली एम्ब्रेस एबनॉर्मलिटी, लाइक इन द केस ऑफ गुजरात केमिस्ट बायोसिल, जब भी कोई कंपनी के रेवेन्यू या मार्जिन एकदम से बहुत वाइडली चेंज होता है, सो रेदर देन गेटिंग डिस्करेज की सिक्लिकलिटी है या फिर वन टाइम इवेंट है, स्टडी दैट। मेजॉरिटी टाइम्स सिक्लिकलिटी ही होगी या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर ही होगा, बट 10 में से 1 या 2 टाइम्स ऐसा भी होगा कि बिजनेस मॉडल या कुछ पर्टिकुलर टेलविंड्स आ गए जिसकी वजह से ये चेंज आया है, तो स्टडी देम। एंड लास्टली कि आप कैसे, ऐसी बात काफी बार हो कि आप 10 बहुत सारा बिजनेस स्टडी कर रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है बिजनेस, ये जो वैल्यूएशन बहुत हाई है, सब आपको दिख रहा है आगे कंपटीशन है जिसके साथ इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहे बिजनेस में। So instead of getting disheartened by that, what I have learned is we can just simply focus on learning new mental models. Because at the end of the day, आप जितने new mental models study करोगे, जितना new business को study करोगे, आपकी learning will compound. And ultimately, investing is a game of compounding. So जितनी learning compound होगी, जितना आपके sharehold मतलब investments compound होती रहेगी, अपना आपके after 10, 15, 20, 50 years बाद returns अपना पाई जाएगी. So with that being said, I would like to end the webinar. Thank you so much for joining the webinar. Thank you, Dhruv. That was an awesome presentation, and I will just add one line. Focus more on the mental models. Examples are just to make you understand, and we understand more through examples, but don't take it as a recommendation. In fact, you can use the same mental models and find out newer stocks in future as well, right? So that was the whole purpose. And as we mentioned at the start, we will put the recording up on our YouTube channel maybe by tomorrow after some light editing. And I'll just quickly take maybe about 2-3 minutes to wrap up what I started with. So Dhruv and Rahil, they have joined us on this new initiative of small cap advisory. And we have collaborated with Atulji on micro cap advisory. If you have any query, anything to ask, you can write to us on email, you can DM us, you can directly call me or WhatsApp me. We are ready to share with you all the things. For this ABCD framework, I would again request you to go and watch the session we had with Atulji. That will give you a very good understanding. Okay. And Dhruv, if you can come back to the last slide. Yeah. Yeah, so just a announcement again. 20% discount is available on our Mission Smile, and this offer is only till tomorrow. So do grab this offer if you are willing to look at subscribing to Mission Smile. With this, we come to the end of the presentation. We can now take up a few questions if anyone has any doubts or any queries. So I can see this thing. I don't see any new. Meetbhai made some really good. I see some hands being raised. Yeah, I'll ask. Meetbhai, you can go ahead and ask your question. Yeah, go ahead. Hello, Ankit bhai. Amazing presentation, Dhruv bhai. Ankit bhai, there is only one question कि आप ये जो advisory services start कर रहे हो, तो combine होगा या फिर दोनों का separate होगा, small cap and micro cap का? नहीं, advisory में क्या है ना कि we have to what we do at Mission Smile is not governed by SEBI. So we don't have to follow any compliance rules of SEBI because it's a learning platform. But when we come into advisory, we have to follow all the SEBI rules. So for that advisory, we'll have a separate way of going through where we'll have to ask you to sign an agreement. Everything will be online and seamless. It will hardly take 5 to 10 minutes. But we'll have to sign an agreement. We'll have to do a risk profiling of all our customers. And then only we'll be able to onboard you and make you avail those services. So that's why it would be a separate.
अंडरस्टूड एंड अंकित भाई ये दोनों सर्विसेज कंबाइन होगी माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप की मतलब एक ही सर्विस होगी और इसमें दोनों यस यस यस, रिकमेंडेशन अगर कोई दोनों लेंगे तो उनको डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे अगर आप माइक्रो कैप और स्मॉल कैप दोनों लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा उसमें। अंडरस्टूड हेल्पफुल थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, Meet bhai, and your comments and your views were very helpful. Also, what you wrote on the chat box was very important. And as you mentioned, maybe in the next webinar we'll also cover Dhruv on exit strategies. Right. थैंक यू अंकित भाई। Thank you. Cheers. Meet. Cheers. Thank you. Jatin, just give me a minute. Yeah. Yeah, Jatin, I have unmuted you. Okay, sir. Thank you so much for conducting these kind of sessions, which are very. I think personally, I feel it is very useful and very informative for a retail investor. And Dhruv bhai, very good presentation. So I like all the mental models or all the way of thinking. So yeah, those are really nice. Actually, I have one question. So, like when you Dhruv, when you think of a portfolio creation, so what is your structure of the portfolio creation? Like from a small cap perspective, so like do you also include large cap or mid cap in your portfolio, or is it like a kind of a Bangladesh cricket team? See, I have only 2 years of experience to be honest. So इस क्वेश्चन का बेटर आंसर अंकित ही दे सकते हैं, बट आई विल जस्ट शेयर माय थॉट्स. So I have two core portfolios. One is I manage my own funds, जो थोड़े बहुत आते हैं, and secondly I manage my sister's funds. So what I do is I invest in safer stocks. इसमें I can see 5 to 10 years of long runway and some special situations like demergers हो गए. Open offer I have recently started to invest after having conversations with Meet Bhai. So उसमें majorly longer portfolio का thinking होता है. While मेरे खुद के portfolio में I focus solely on special situations and some new type of investing, because I know that I am very small and my initial principal amount at the moment is not very high. So since I have only 2 years of experience, however मैं खुद के पैसे में mistake करूँगा तो I will learn new things. So currently, at least for next 1-2 years, I am not even focusing on returns. Like मैं check भी नहीं करता कि मेरे returns है क्या है, मतलब rarely month में एक दफा कुछ buy करना तो check करता हूँ. When I am just focusing on learning new different styles. Like if you would have asked me, तो मैं 1 year पहले I didn't know कि open offer होता क्या है. Demerger में I hardly used to participate. In last 1.5 year में demerger ये सब में ज़्यादा focus करने लग गया हूँ. So I'm trying to create a mix and I'm also finding my own niche, because again 2 years is a very small time to know ki what suits you. So currently I'm trying several new things, but yeah, in my sister portfolio it primarily comprises of large companies. Like large companies as in I don't invest in very large companies. Some portion like 20% can be that part, but certain mid cap companies that I can see कि अगले 5-10% 10 years में थोड़ा revenue visibility है. So even though their valuations might be a bit expensive, I don't mind paying them because I'm planning to hold them for long and do less churn basically. So that is from my. Yeah. So Dhruv, you have answered it pretty well. I'll just add one thing over here. So Jatin, as you asked this question, so every investor is different. Specifically anyone who is starting new, as Dhruv mentioned about himself, I would also completely agree with Dhruv that try and expose yourself to as many styles as possible and find out which one suits you best. And that is the whole purpose of our Mission Smile platform also. It is not that we'll keep on talking about only one type of company or one type of industry or one type of investing style. That is why we call so many guests and investing stalwarts from the industry. And among our Mission Smile members also, we encourage members to also perform, to present on a few businesses so that we can get a variety of, it's just like a buffet. ऐसा नहीं है कि आपको एक ही तरह का खाना खाना है, right? You have to get yourself, if you are new to the industry, put some capital. बिना पैसा लगाए आप कभी भी नहीं सीखोगे मार्केट के ऊपर. पैसा लगाना जरूरी है, बट थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ और अलग अलग स्टाइल पे देखो. When you will do that way, that is the best way to find yourself. And investing is more about finding yourself. हम लोग कितना ही बोल ले मुझे मालूम है मैं किस तरह का इन्वेस्टर हूँ. It takes lot of time, lot of practice, lot of mistakes to ultimately figure yourself as an investor. So that is our purpose through Mission Smile. So Jatin, if you have any other follow-up question, you can go ahead.
Thank you, okay, sir. Thank you so much. Sir, just one last small question from my side. So, like, when we speak about small caps or micro caps, so like in Indian context, like what is the upper limit of a small cap or a micro cap? So I think SEBI has made a very clear distinction. So I don't remember the exact, but I think top 100 is large, and from 100 to 250 is mid, and below 250 is small cap. So that is the SEBI disclaimer or description. But another way of looking at it is like we at SmartSync Services believe in our coverage. We we also have a model portfolio. We have our own portfolio where we believe 500 crore se upar jo bhi hai, that is from 500 crore is basically small cap is what starts. 500 to 3000 crore is roughly, there is no description. This is how we have mentally made up our framework. Ki 3000 crore tak is small cap. From 3000 to 5000, 50,000 crore is about mid cap. Or 50,000 crore ke upar jitne bhi hai, wo sab large cap hai. That is our mental framework. But SEBI ka agar aap description dekhoge, to it is clearly mentioned that top 100 companies are large cap. Next 150 are mid cap. And उसके बाद सारे के सारे small cap है. They have not defined anything like कि micro cap क्या होता है, right? And then there is Bangar cap as well, right? Yeah, Jatin. Anything else? Thank you, Yogesh sir. Thank you for all this information, and I'm very thankful to all the team at SmartSync that these information sessions, which are very valuable, is provided without any it is just meant for imparting information to the retail investors and helping them out. Thank you. Thank you, Jatin. Let me just check if there are any more. Okay, I guess there are no more questions, Dhruv. So with this, we come to the end of the presentation. Thank you so much, all of you, for spending so much of time on a weekend. And we'll keep sharing more about, stay tuned to our YouTube channel, to our Twitter channel. We'll keep on sharing more updates about Mission Smile and SmartSync services in times to come. Thank you and bye-bye.